Saudi Grove is just inspiring to begin with.
हेलो। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम चो, कसकाय. A cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the day 7 of the GSC 2020 at the Goregaon Sports Club. Today is going to be a cracker of a game which has the potential of going right down to the wire. Team Challengers versus Team Warriors. Just to let you know, both these teams have won their first league match. They've got those first points on the board. But to consolidate their position on the table, they really need to win this one so that they can get into some kind of a comfort zone. Two top teams pitted against each other in this very, very crucial match. यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इसी तरह से आपका साथ और स्नेह गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के हर इवेंट के साथ बना रहे, ऐसी गुजारिश करता हूं. टीम चैलेंजर्स बनाम टीम वॉरियर्स के कप्तान आर्यन पटनी ने इस मैच के टॉस को जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टीम चैलेंजर्स के ओनर्स राहुल झा, विक्रम पंजवानी, हिमांग पंडित. टीम वॉरियर्स के ओनर्स नितिन सिंगल और ललित विच. सभी ओनर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. टीम चैलेंजर्स के कप्तान विक्रम पंजवानी. चलिए, हमारे दोनों एम्पायर्स रेडी. प्रथमेश आंग ने जॉन्टी के हाथों से उस नई गेंद को लेकर सेंटर पिच पर पदार्पण करते हुए बस अगले कुछ ही क्षणों में यह मैच यहां पर मार्गस्थ होगा. दोनों ही टीम्स के लिए महत्वपूर्ण मैच, क्योंकि इस मैच को जीतकर अपनी पोजीशन टेबल पर थोड़ा पुख्ता करना चाहेंगे. उस लिहाज से यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है. चले, सबसे पहले तो चैलेंजर्स के प्लेइंग 11 के साथ आपको रूबरू कराता हूं. वेदांत गाडिया, कप्तान विक्रम, श्री गोपाल जाजू, राहुल झा, जिगर शाह, रोहन शाह, दीपेन पटेल, गौरव देवली, मोनिश शाह, अमोल पोलके विकेट कीपर बैट्समैन, उत्सव पारेख और 12th मैन के रूप में, जैसे कि विक्रम ने टॉस के समय बताया कि विनीत शाह होंगे. टीम को ढेरों शुभकामनाएं. अब आपका परिचय टीम वॉरियर्स के प्लेइंग 11 के साथ कराता हूं. कप्तान आर्यन पटनी, अविन पटेल, पवन पनारा, विकेट कीपर बैट्समैन सागर उच्चिल, पार्थ शाह, धर्मेंद्र पारिक, अमरकांत जैन, विकास गोयंका, रोहित राजन. 12th मैन के रूप में होंगे साकेत अधिकारी. और ऐसा प्रतीत होता हुआ कि नई गेंद को ऑपरेट करने के लिए कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से हैप्पी होंगे. देखना है कि इस नई गेंद के साथ किस तरह से ही मेक्स इनरोड्स इनटू द batting lineup of team challenges. Having won the toss, Aryan has decided to bowl first, and the primary aim would be to make sure that without giving away too many runs, they will try and pick up a few quick wickets. On the other hand, Vedant Gadia, as we all know, can be a destructive batsman, loads and loads of talent. He's already played for the Mumbai Under-19 team and is indeed a fabulous cricketer, amongst the very best at the Goregaon Sports Club and also in this part of Mumbai. To give him company, the owner and the captain of the team, a very, very matured cricketer, a man with such an intelligent head over his shoulders. So Vikram Panjwani, who's had a fantastic innings in the earlier match, courtesy which his team got to win that one. The Man of the Match award winner in the last match. Of course, he shared that Man of the Match award with one of the star players of his team, Shri Gopal Jaju. All set. We welcome one of the hot favorite players as far as the senior cricketers is concerned, Jadugar Vivek Narsaria.
Yes, all set. Can we have the countdown? The finishing touch being given. We are about to get started. The countdown will come on screen in just a sec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play new. It's playtime. Happy to Vedant. Nicely leading into that short, low full toss. A good effort, but that ball will cross the boundary line. Off to a good start here. Not such a bad delivery, getting some good shape. It was a low full toss, very difficult to get away with. But as I mentioned earlier, Vedant Gadia is such a accomplished top order batsman. He really leaned into that one. Nice connection. The ball almost hitting the lowest part of the bat. In spite of that, it had enough steam on it to go past the boundary. Once again, the same kind of a delivery, this time off the outer edge to the man at a short third. Yeah, at this stage, it is absolutely obvious that Amarkand Jain is trying to bowl a fuller length. He's trying to get this new ball to swing. He wants to beat Vedant with his swing. The stem slightly short, right behind the line of that delivery. Yes, both these batsmen will have to be slightly careful because he's a young gun at the Goregaon Sports Club. Vedant, a very swift runner between the wickets. On the other hand, Vikram is not known for his running between the wickets. He's quite a mature cricketer. He will not take those risky runs. Getting good shape, nicely played. Good piece of footwork by Baba, Dharmin Parikh. Just about getting his foot down to the ball at the right moment. Otherwise, that ball was really on course to a dot shot boundary. A big thank you to our sponsors. Parikh Group, Body First, Shakti Corporation, Sejal Realty, Edelweiss, Jensen LED Lights, Gajjar Group, Dot Shot, Zig Sports Studio and Hex. We've already seen one dot shot boundary off the blade of Vedant Gadia for the first time in this match. Today evening, it's going to be the captain, Vikram, to face Happy. Such a seasoned bowler, keeps the ball in the right areas more often than not. Amarkand Jain, yes, he will have to be in top form tonight. We welcome Pritpal Singh Bharaj. Yeah, it's an obvious tactic that the think tank of Team Warriors have decided to bowl a fuller length. Especially Happy has been asked to bowl a fuller length to get that shape going for him, to get that movement. So it's a well thought out strategy. This could be dangerous. We'll have to wait and watch. Yes, he slipped. He lost his footing. Can't really do much about it. Unfortunate incident for team challengers. That was really unfortunate. The only word that I can think of is unfortunate. He was looking good, but yes, he will take this in his stride because he's a professional cricketer. It's a part of the game. I just wonder what kind of spikes is he wearing. I'm sure that he must be wearing at least half spikes or rubber spikes at least, to say the least. In comes Mr. Cool, Rahul Jha. This is such an unfortunate incident. Yes, so Vedant back on his way to the hut, and it's going to be up to Vikram Panjwani and Rahul Jha now to
consolidate this innings, steady the ship and make sure that they post quite a decent target on the board. Team Warriors will be more than happy to see the back of Vedant Gadia, as we all know that if Vedant Gadia stays at the wicket for say 15 to 18 to 20 minutes, he's going to take his team to a great score. We all know that one of the most destructive batters at the Goregaon Sports Club, unfortunately back in the hurt. Unfortunate incident, he slipped at the wicket and really could not complete the run. Yes, that wicket of Vedant will really be a great morale booster here for Team Warriors, because that is the wicket they all were looking for, having won the toss. The dream start was to see the back of Vedant Gadia in the very first over. They've accomplished it. They've drawn a first blood, and I'm sure that this will be a morale booster, and they will really bowl with their tails up now. Just the kind of morale booster that Team Warriors had wanted. Off to a good start. The score at the end of the first over, 6 for 1, and the new bowler, left arm over the wicket. It's going to be Priyank Jain, the man on strike. Rahul Jha for the first time this evening. Down the leg side, but getting some good carry. The ball thudding into the wicket keeper Sagar Uchil. The two umpires, Kiran Purandare and Prathamesh Angne, in the hot seat. The third umpire, Abhishek Ved Pathak. On my right, the manual scorer, Jaunty Singh, and to my left, the digital scorer, Akash Singh. And yes, all the best to Team Promo and all the members of his coverage team. They are starting to do a fabulous job. They are in form. Pramod Kashyap and his team. That's a strong appeal. We'll have to wait and see. At this stage, no, says the umpire. It has been referred to Abhishek Ved Pathak. Okay, there's a review for LBW. Is it a fair delivery? Yes, it's a fair delivery. Waiting for the best angle. Okay, waiting for ball tracking. Okay, the ball is pitched outside leg. So you can stay with your original decision. Prathamesh, you can stay with your original decision of not out. Yes, he nicely went to the routine of slowly having a look at the replay, making sure that everything is in order, taking his own time, pitching just outside the leg stump is what he conveyed. Thank you, Abhishek. Well done. Yes, back to the cricketing action. Fielding side has lost their one review. You really can't blame the fielding team for taking that review in this kind of a situation.
Getting some good swing, nicely putting bat to ball. That will really give Rahul good confidence that fill off the ball on the bat. What a shot! Superb shot, a cracking shot, man. Belter of a shot, the way he got into a position. Mind you, this is not an easy shot to execute. Dot shot boundary off the blade of Rahul Jha. Yes, in the meantime, we welcome the man behind the show, the Outdoor Sports Committee Chairman, Mr. Karan Singh Walia. Good evening, Karan bhai. With that dot shot boundary, the score on to 11. Definitely is getting some good shape. He is getting the ball to come into the batsman. But yes, this is the sign of a man in confidence. He's starting to connect the on drives. And when a batsman starts to play the on drives to the swinging ball, that really is a testimony to the fact that he is in good touch. On drive is one of the most difficult shots to play in the book, especially to the swinging ball. Yes, he's getting that late movement and he's pitching the ball in the business area. Karan bhai is here. Good evening. The score at the end of 2 eventful overs, 11 for the loss of 1 wicket. Amarkan Jain to continue from the combox end. The score at the end of 2 overs, 11 for 1. Such a pleasant weather out here at the Goregaon Sports Club. A superb ground, looking all the more beautiful under the lights. Fresh wickets. Such good cricketing standard. More than anything else, the cricketing standard is right up there. Yes, I think Aryan, the captain and the senior members have decided to bowl a fuller length with the new ball. They are keeping the ball further up to the batsman. That was the edge. Unfortunate for Happy. What a superb delivery. The earlier delivery was a fuller one, dragging the batsman onto the front foot. This time expecting the same kind of a length, shorten the length slightly, good enough to get that outside edge. Unfortunately, the lunging Uchil could not hold on to the ball. But what a fantastic delivery. The moral victory for Happy. Super bowling. This is fantastic bowling. Nicely played by Rahul Jha. The last couple of innings that Rahul played in the last season really gave such a fantastic account of Rahul Jha, the batsman. What a shot. It's coming into the combox. Superbly timed. This is an aggressive looking Rahul. Super batting. This is exactly the kind of approach you would want in a T20 format, especially from a top order batsman. They have lost an early wicket, so he's not taking unnecessary risk. He's playing out the good balls, but he's not letting the loose balls go away. Change in pace into the gap. Superb batting by Rahul Jha. Dot shot boundary.
We've already seen three dot shot boundaries in this inning so far. A big thank you to our sponsor, Dot Shot. Mayura is here. Welcome. Yes, so with that dot shot boundary, the score now on to 20. This is such a good contest. This is brilliant bowling. He almost had Vikram in his net. अच्छी गेंद, लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में आकर खेला राहुल जाने, लेकिन ये अच्छी बात थी कि राहुल ने उस गेंद को फेंड किया काफी हल्के हाथों से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीतीश, कैन यू प्लीज come onto the stage, Mr. Nitish. प्रियांक अपने स्पेल को मार्गस्थ रखेंगे, फार एंड की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी की है, काफी सक्षम गेंदबाज है। पोटेंशियल प्रियांक ने पहले ही 2 मैचों में, यानी आज का ये दूसरा मैच, अब तक उन्होंने दर्शाया है कि उस प्रियांक के पास वो पोटेंशियल बिल्कुल है। बढ़िया शॉट, राहुल जा ने आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए बिल्कुल खुलकर खेल रहे, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे। मैंने जैसे ही बताया कि जिस तरह का वो शॉट प्रियांक को इसके पहले के ओवर में डीप स्क्वायर लेग में जो लगाया था शॉर्ट पिच गेंद को, वो एक शॉट बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद जो ऑन ड्राइव लगाया, स्विंगिंग गेंद को जब बल्लेबाज ऑन ड्राइव लगाने लगता है तो बिल्कुल आप ये सोच के चलिए कि आज बिल्कुल उनकी बैटिंग सर चढ़कर बोलेगी। डॉट शॉट बाउंड्री, 5वीं डॉट शॉट बाउंड्री। चलिए, ये उनकी विकेट मिली है। थोड़ा सा आक्रामक खेलने का प्रयास, अपनी लाइन को मिस किया। मैंने पहले ही बताया था कि ये सोची समझी साजिश है टीम वॉरियर्स की, कि गेंद को ऊपर रख रहे, स्विंग कराने की कोशिश में है। बहुत ही बढ़िया गेंद, राहुल झा का वो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। ये बहुत ही बड़ा धक्का है और ये जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट मिली है यहां पर प्रियांक को। जेनसन एलईडी लाइट्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। डीआरएस के सेटअप को और विकेट्स को स्पॉन्सर की है जेनसन एलईडी लाइट्स। चलिए, अब दोनों ही नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले दोनों ही गेंदबाजों को एक एक विकेट प्राप्त हुई है। 2 सलामी बल्लेबाज, 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पेविलियन में वापस जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज उत्सव पारिक अब सेंटर पिच पर पहुंचते हुए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैच इस वक्त मार्गस्थ है। वाकई में जिस तरह से बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला है इस सीजन की शुरुआत में, ऐसा लगता हुआ कि बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने सोचा है ये इवेंट एक ब्लॉकबस्टर इवेंट होगा। शायद इस तरह का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड आज तक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। उतना अच्छा क्रिकेट इस सीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी नए युवा क्रिकेटर्स ने इस साल रजिस्टर कराया है, काफी लोगों का चयन हुआ है, काफी लोग अपना डेब्यू करा रहे हैं। अब तक जो 6 मैचेस आज के पहले हुए हैं उसमें काफी नए सितारे उभर कर आते हुए। तो यस, अगर क्रिकेट बेहतरीन देखने को मिला तो फिर उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। हम सभी के लिए, जो दर्शक इतनी बड़ी तादाद में हर रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो भी दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए, इन सभी के लिए सबसे अहम बात है क्रिकेट स्टैंडर्ड जो बहुत ही बढ़िया है इस साल। गए साल भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इस साल तो ऐसा प्रतीत होता हुआ कि वाकई में एक नॉच ऊपर गया है स्टैंडर्ड।
बहुत ही अच्छी गेंद। जब इस तरह से नई गेंद आपसे बातचीत कर रही है, नई गेंद शरारत कर रही है, ऐसे हालात में आपको आपकी तकनीक को बिल्कुल सटीक रखना है, टाइट रखना होगा। तकनीक पर तवज्जो देना होगा जब आप इस तरह की स्विंगिंग डिलीवरी को आप खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए, जब आप इस तरह से लेट स्विंग कराते हो, जब आप गेंद को इतनी ऊपर की तरफ डालते हो, तब ये एक अवसर प्राप्त होता है। बल्लेबाज अगर शॉट्स खेलने का प्रयास करेगा तब ही गलती करेगा, तो यही कोशिश इस वक्त प्रियांक की है। एक बहुत ही अच्छी सटीक सोच के साथ अमरकांत जैन और प्रियांक गेंदबाजी करते हुए। थोड़ी सी ज्यादा लेग स्टंप पर थी और इस मर्तबा इतनी मूवमेंट भी बाहर की तरफ नहीं मिली। फलस्वरूप बड़ी आसानी से बिल्कुल अपने शरीर के नजदीक, अपने सर के नीचे अच्छी तकनीक के साथ खेला उत्सव ने। उस एक रन के साथ 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट इस ओवर में प्रियांक ने लिया है और वेदांत का विकेट रनआउट के रूप में मिला। चलिए, अब स्ट्राइक पर विक्रम सामना करेंगे प्रियांका। अच्छी गेंद, आक्रामक शॉट, गैप में खेला, थोड़ा सा अपिस्टी खेला था लेकिन कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि गैप में वो गेंद गई। 4 रन्स मिले, डॉट शॉट बाउंड्री विक्रम के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आज का ये डे नंबर 7 जीएससी 2020 का आप सभी का फिर से एक बार गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस बेहतरीन मैदान पर मैं स्वागत करता हूं। आउटडोर स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन करण सिंह वालिया जी ने और उनकी पूरी टीम ने एक बेहतरीन क्रिकेटिंग सीजन डिजाइन किया है, कंसेप्चुअलाइज किया, डिजाइन किया और अब वाकई में उम्दा तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे। शुरुआत अगर पहले 6 दिनों में अगर इतनी शानदार हुई है तो आप अंदाजा लगाइए कि अब आगे जाकर कितना बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। ये सीजन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इतिहास में मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन सीजन होगा। चलिए, अब स्वयं कप्तान, एक बहुत ही युवा प्रतिभाशाली हुनरबाज जोशीला प्लेयर आर्यन अब गेंदबाजी करेगा। स्ट्राइक पर है उत्सव। उत्सव के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ा अवसर है आज। ये आज अपॉर्चुनिटी है, चुनौती को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होगा। उत्सव ने केपेबल बैट्समैन है, बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है। ही नीड्स टू कम गुड टुनाइट। गौरव तलवार जी का मैं स्वागत करता हूं। मोस्ट ऑफ द डेज playing it up pistely, but into the gap. A man in pursuit will have to wait and see. The ball has enough gas on it to go past the boundary. Dot shot boundary off the blade of Utsav. Just what the doctor ordered. With that boundary, the score now on to 34. Yes, warm welcome to Sam Kapadia. Sushil Patil is here. Virendra Bhai is here. सभी का मैं स्वागत करता हूं। काफी विश्वास जताती है टीम चैलेंजर्स उत्सव पर, जैसे कि मैं सुन रहा हूं कि लगातार उनके खेमे में से ये कॉल आ रहा है कि उत्सव बिग इनिंग्स, तो काफी विश्वास जताया है और इस विश्वास पर आज उत्सव ने खरा उतरना होगा। यस का कॉल तो दिया था लेकिन थोड़ी सी कशमकश थी।
यस नो, अंत में कोई खतरा नहीं, वो रन बिल्कुल बनता था और अंत में बड़ी आसानी से मुकम्मल भी हुआ। 36 रन। इस इनिंग्स में काफी कम स्ट्राइक अब तक विक्रम को मिली है। बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी हर इनिंग्स को स्थापित करते हैं, मैच सिचुएशन को भली भांति जानते हैं और उसी अनुसार एक अच्छे ढांचे में अपनी गेम को संवार कर चैलेंजर्स की इनिंग्स को इस वक्त मार्ग प्रशस्त करते हुए उत्सव के साथ विक्रम सामना करेंगे आर्यन का। क्या बात है, डॉट शॉट बाउंड्री निकली विक्रम के बल्ले से। कितना पॉजिटिव शॉट, सकारात्मक शॉट, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ उस शॉट को एग्जीक्यूट किया था। चलिए, ये शॉट तो विक्रम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे जाएगा। अपने पहले ओवर में बहुत ही कम मर्तबा हम लोगों ने देखा है कि महंगे साबित हुए। इतनी अच्छी शुरुआत नहीं आर्यन की, बहुत ही आला बल्लेबाजी इस वक्त विक्रम और उत्सव की। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये कैच दे गए, थोड़ी सी गलती की। जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, तीनों ही बल्लेबाजों ने डॉट शॉट चौका या चौके लगाने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। दुर्भाग्यवश वेदांत आउट हुए। सॉफ्ट डिसमिसल राहुल के लिए भी और विक्रम के लिए भी। दिस गेम इज अ ग्रेट लेवल, isn't it? Blissful euphoria one moment and the other moment it could be utter dismay. अर्श से फर्श तक ये क्रिकेट गेम आपको ले आ सकता है। ये सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, सीजन कैंपेनर्स है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स को आपको आपके स्ट्राइड में लेना ही होता है। विशेष रूप में जब आप टीम के कप्तान और ओनर हो तो बिल्कुल आपको आपकी टीम को मोटिवेट करना होता है, पूरी टीम को बांधे रखना है और ये बखूबी काम करते हैं विक्रम, हिमांग पंडित और राहुल झा। नाराज तो होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में विक्रम है अपनी टीम की नैया का पार लगा सकते, इस बात में कोई दो राय नहीं। नए बल्लेबाज रोहन। चल, एक वक्त शायद आर्यन के जहन में ये बात आई होगी कि मैंने क्यों ये ओवर लिया, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि मैं 12 रन्स दूंगा और मैं विक्रम की विकेट लूंगा तो मैं कभी भी वो 12 रन्स देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे विक्रम की विकेट चाहिए। यस, सुबु इज हियर, वेलकम, गुड इवनिंग। A big thank you to Vinay Surana, always is of such great help. Vinay Surana. With that single straight away off the mark, Rohan. गुड इवनिंग अग्रवाल सर। वाइट का इशारा। अब तक हमारे अंपायर्स के लिए भी काफी अच्छा सीजन रहा है। हल्के हाथों से खेला है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वहां पर पनारा मिस कर गया। वो विकेट तो बिल्कुल था ही, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने आशा भी छोड़ दी थी, दिल हलक में था और शायद पनारा को भी पता नहीं कि सेंटर पिच पर क्या हो रहा है। 5 ओवर के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त काफी दर्शक यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट देखते हुए आप सभी क्रिकेट श्रोताओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। केवल यही गुजारिश करूंगा कि देखते देखते अगर कोई अच्छे
कमेंट्स आप दे, लाइक्स दे, या हम सभी के लिए कोई सजेशंस भी दे तो मोर देन वेलकम। थोड़ा सा रिएक्ट करें, हमारा हौसला बुलंद होगा, हौसला अफजाई भी होगी हमारी। थैंक यू। यस, तो यूट्यूब के व्यूअर्स थोड़े आप हमें एनकरेज कीजिए, थोड़े से लाइक्स दे, सजेशंस भी दीजिए, मोर देन वेलकम। जीएससी ऑलवेज इज ऑलवेज वेलकम टू सजेशंस। और इसी तरह से आपका साथ इस लंबे सीजन के दरमियान हमारे साथ हर वक्त हर पल बना रहे, बस यही प्रार्थना करता हूं, यही गुजारिश करता हूं। चलिए क्रिकेट एक्शन की तरफ रुख मोड़ते हैं। धर्मेन पारिक उर्फ बाबा बहुत ही शातिर दिमाग के गेंदबाज है। अपनी लाइन और लेंथ, सटीक लाइन और लेंथ के लिए गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के क्रिकेटिंग गलियारों में काफी सुर्खियों में रहते हैं बाबा। बढ़िया शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी उत्सव की। शायद इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो इस मैच के बाद वाकई में पूरी टीम उत्सव मनाएगी। काफी दारोमदार है उत्सव पर, उत्सव एक अहम कड़ी है और आज बिल्कुल अपनी उस बढ़ती हुई रेपुटेशन को और ज्यादा पुख्ता करना होगा, और उससे भी ज्यादा इस लंबे सीजन के लिए अच्छे फॉर्म में आना बहुत ही जल्द उत्सव जैसे एक की बल्लेबाज के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए उस डॉट शॉट चौके के साथ 47 रन। बहुत ही बढ़िया लाइन स्ट्राइक की है, बहुत ही शानदार दो गेंद ऑलरेडी की है, और जिस गेंद पर डॉट शॉट चौका लगा वो भी इतनी खराब नहीं थी। क्योंकि बैकफुट पर खेला था उस वजह से बहुत ही जल्दी नॉन स्ट्राइकर ने नो का कॉल दिया। बहुत ही बढ़िया सोच, अगर रन के लिए भागते तो शायद मुसीबत में आ जाते। बहुत ही ज्यादा शॉट, थोड़ी सी खराब गेंद, सही अंजाम तक पहुंचाया। इस तरह के क्रिकेट में, इस तरह के स्वरूप के क्रिकेट में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा भली भांति जानता है, इतना सीजन्ड क्रिकेटर है एंड ही नोज। उन्होंने सीधे सीधा हाथ बताया कि यस मेरी गलती हुई। 50 runs up on the board for team challengers, 51 for 3। तीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पेविलियन का रुख कर चुके हैं, लेकिन काफी अच्छी रन रेट के साथ ये इनिंग्स मार्ग प्रशस्त करते हुए उत्सव और रोहन शाह, ये दोनों ही सक्षम बल्लेबाज है। रोहन शाह के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू शाइन। The score at the end of 6 overs is 52 for 3। ये सब बहुत ही ज्यादा दारोमदार उत्सव और रोहन शाह पर है। अगर टीम चैलेंजर्स को 150 के उस पार जाना है तो मेरे ख्याल में ये दोनों में से एक बल्लेबाज को आज किसी भी हाल में 45-50 प्लस की इनिंग्स खेलनी ही होगी। दोनों में से एक, दोनों ही अगर बिल्कुल लय में आकर हाफ सेंचुरीज लगाते या तो अच्छी पारी खेल लेते हो तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि टीम चैलेंजर्स एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में हो गई। चलिए अब नए गेंदबाज पार्थ को इंट्रोड्यूस किया है आर्यन ने, अपने आप को रोका है। बहुत ही प्रभावशाली और काफी युवा गेंदबाज है पार्थ। गया सीजन काफी अच्छा था पार्थ के लिए, बहुत ही जल्दी
अपनी रंगत में आना होगा इस सीजन में। एक अहम कड़ी है पार्थ। अच्छी गेंद के साथ तो पार्थ ने अपने स्पेल को मार्गस्थ किया। अच्छी बैटिंग भी उत्सव की। देखिए उत्सव की इनिंग्स को अगर मुझे एनालिस तो थोड़ा सा एनालाइज करना है तो मैं कहूंगा इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग यू नो फॉर दिस बैट्समैन। Couple of wonderful shots. He's been beaten on a couple of occasions, but yes, he's such a big player here for Team Challengers. Such great potential, such a good player. He needs to come good tonight. गैप में खेला है। 3 रन बड़ी आसानी से प्राप्त हुए। छप्पन रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी टाइमिंग। सीधा आर्यन के पास कोई गुंजाइश नहीं कि रन के बारे में सोच भी सके। अच्छी टाइमिंग, अच्छे फॉर्म में उत्सव। गेंद की लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन किया था और बड़े हल्के हाथों से अच्छी तकनीक के साथ बिल्कुल अपने सर के नीचे शरीर के पास उस गेंद को खेला, केवल दिशा दी। बस इसी तरह से मेरिट पे खेलते हुए अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा। जिस तरह से उत्सव बिल्कुल अब फोकस नजर आते हुए अपने आप से लगातार बात करते हुए, बस एक सही अप्रोच इस वक्त, अच्छा एटीट्यूड। इस ओवर की 2 गेंदबाजी बाकी है। पार्थ गेंदबाजी करते हुए रोहन को। काफी ज्यादा वाइड, बिल्कुल सही इशारा। एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ा वाइड के रूप में। 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Well bowled and nicely played as well, getting on the top of the ball. थोड़ा सा पिछटी खेला है। बाबा मौजूद, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करना होगा। ओवर की समाप्ति। पवन पनारा, पवन पनारा। Bahuli, you need to come here. There is some urgency. Please come near the com box. Thank you. Score at the end of 7 overs, 59 for 3.
Aryan to bowl from the far end now. The score at the end of 7 overs, 59 for 3. Down the leg side, we'll have to wait and watch for the umpire's signal. Here we go, 5 runs added in the form of extras. With those 5 wide runs, 64 for 3. अब पिछली खेला है लेकिन कोई खतरा नहीं. डॉट शॉट बाउंड्री रोहन शाह के बल्ले से एन वक्त पर बल्ले का फेस खोला. बिल्कुल इंटेंशनल था. थोड़े से ऑफ कलर नजर आते हुए आर्यन पटनी थोड़ी सी दिशा से आज भटके हैं और पूरी तरह से फायदा उठाया है टीम चैलेंजर्स ने. टीम चैलेंजर्स have lost wickets at regular intervals, but they haven't stopped playing the shots. They are playing their natural game. This time much better, shortening the length of his delivery, playing with soft hands over that single. The score now on to 69 for 3. 2 more balls to come in this over from Aryan. This is such a good cricket match here. In spite of having lost 3 wickets, the current run rate is 9 and over. Just imagine, there have been so many dot shot boundaries.
बहुत ही बढ़िया गेंद पार्थ की, अच्छी शुरुआत। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर, स्ट्राइक पर उत्सव। क्रॉस बैट के साथ खेला है, ड्रैग किया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, बड़ी आसानी से दूसरा रन मुकम्मल किया। रन संख्या अब जा पहुंची है 72 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग्स का इस वक्त 9वां ओवर मार्गस्थ हुआ है। गेंदबाजी करते हुए पार्थ, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उत्सव ने अब तक 19 गेंदों का सामना करते हुए 3 डॉट शॉट बाउंड्रीज के साथ 21 रन बटोरे हैं। केवल दिशादीन, थोड़ा सा नजाकत से खेला, इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, वहां पर एक रन बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ। बहुत ही दिलचस्प मैच, क्योंकि बिल्कुल फाइट करते हुए टीम चैलेंजर्स नेचुरल गेम खेल रहे। ये एक अच्छी सोच है कि इस लीग, राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट के केवल दूसरे ही मैच में पहला मैच जीता है, तो बिल्कुल उन्होंने सोचा है कि विपरीत परिस्थिति में भी हम हमारे शॉट्स खेलने से कतराएंगे नहीं। फ्लाइट किया, बैकफुट में खेले। इस तरह की फ्लाइटेड गेंदों को बैकफुट पर खेलना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है, लेकिन आखिरी वक्त तक नजरें बनी हुई थी गेंद पर। बड़े आत्मविश्वास से खेला रोहन ने। 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 9वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइक पर उत्सव। बहुत ही बढ़िया शॉट, दौड़ लगाते हुए फील्डर, थोड़ा सा साधारण प्रयास, फलस्वरूप डॉट शॉट बाउंड्री। उत्सव के बल्ले से 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर डॉट शॉट चौका लगा। 78 फॉर 3 एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स। चलिए फिर से एक बार जिम्मेवारी दी है बाबा को, बाबा के सक्षम कंधों पर यह जिम्मेवारी आर्यन ने सौंपी है कि इस क्रूशियल स्टेज पर यानी कि ड्रिंक्स के स्ट्रोक के पहले की आखिरी ओवर को लेकर बाबा गेंदबाजी करे। चट्टान जैसा अनुभव। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड्समैन की टीम है बिल्कुल सतर्क है, एंड हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली भी बिल्कुल तैयार है। रन रेट बहुत ही पुख्ता है, सम्मानजनक। चलिए ये विकेट दे गए, क्या कैच लिया है। शायद इंजरी भी हुई होगी, देखना होगा। ये हमारे फिजियो भी तुरंत जाते हुए ड्रिंक्स इंटरवल की घोषणा हो चुकी है। पराग भाई, गुड इवनिंग। Yes, a big thank you to बहुत ही बढ़िया कैच, ये एक शानदार कैच लिया है।
45 प्लस क्रिकेटर क्या एफर्ट लगाए, उन्हें पता है कि रोहन शाह का कैच कितना मायने रखता है. यस, मे आई रिक्वेस्ट एंड वेलकम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट निखिल भाई पटेल. मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आए, करण भाई से संपर्क साधे. निखिल भाई. Yes, a big thank you to the staff members of Goregaon Sports Club. They're doing a swell job. Yes, we all know that Karan Bhai can be a very tough taskmaster because he needs nothing less than 10% perfection. We all know this, and the Goregaon Sports Club staff members are doing a fantastic job, always on their toes, very alert, making sure that each and every facility is provided to perfection to all the players. And they also take such good care of the commentators, the umpires, the coverage team. A big thank you to the staff of GSC. Cheers and keep going. उसी तरह से हमारे जो ग्राउंड्समैन की जो टीम है, आई थिंक ये जो ग्राउंड्समैन की टीम है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की, बहुत ही बढ़िया टीम है. दे आर इंडीड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एज फार एज ऑल मैदान क्लब्स आर कंसर्न्ड इन मुंबई. मैं केवल उत्तर मुंबई या गोरेगांव मलाड की बात नहीं कर रहा हूं. पूरे मुंबई शहर में जितने भी बड़े क्लब्स है, छोटे मैदान क्लब्स है, जितने भी ग्राउंड्समैन की टीम से, काफी अच्छे ग्राउंड्समैन पूरे मुंबई शहर में है, काफी पुख्ता काम कर रहे. लेकिन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की टीम वाकई में पहले 3 या 4 टीम्स में से होगी पूरे मुंबई शहर में. इतनी सर्वोत्तम टीम है. तो मोती भाई और उनकी पूरी टीम का मैं हम सभी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत ही बढ़िया विकेट्स आप देते हैं, लश ग्रीन आउटफील्ड की गरिमा को भी आप बनाए रखते हैं. बहुत ही बढ़िया. और हमेशा करण भाई वालिया कहो, स्टाफ मेंबर्स को हमेशा आपको एनकरेज करते, आप के हौसले बुलंद करते हैं. थैंक यू. चलिए अब नए बल्लेबाज अमोल पोल के विकेट पे उतरे हैं. इसके पहले के मैच में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज से अवेलेबल हुए हैं. With that single, the score on to 79. That was such a fine catch by Baba, and yes, we all know how important that wicket of Rohan was, and he really put in his 10% effort. He made sure that in spite of him falling down, he did not let the ball get out of his hand. Superb catch by Baba. Well flighted, trying to step out to the delivery, just a couple of baby steps, converts that ball into a full toss, drives it all along the ground towards the deep mid-on. Happy the man stationed in the deep, just a single taken. With that single, the score now on to 80 for 4. Dharmin to continue.
Okay, there's an appeal for run out. Checking the side on angle. Okay, the bat is grounded within the popping crease when the bails are dislodged. The batsman is not out. You're just checking for whether the bat was grounded or no. It is grounded, so the batsman is not out. थोड़ा सा पिच नहीं खेला है, एक सेकंड तक दिल हलक में था, बिल्कुल मौका था, बड़ी तेज रफ्तार से गेंद उस फील्डर के पास गई, थोड़े से अचंभित रहे, लेकिन चांस तो हम बिल्कुल कहेंगे। डॉट शॉट बाउंड्री 87। चलिए इस एंड से अब बॉलिंग गार्ड में परिवर्तन किया है आर्यन ने, गेंद सौंपी है हैप्पी को। ड्राइव किया डाउनटाउन, डीप मिड ऑफ पर आर्यन मौजूद, बड़ी आसानी से एक रन मुकम्मल किया। 89 for 4। Loss in concentration, lapse in concentration।
Utsav needs to put a price on his wicket because he's the man who is relatively set and he really needs his team to be taken to a respectable score. We'll have to wait and watch. Falling just short of Happy. Maybe Happy should have sprinted and maybe he should have dived. Maybe 5 years back, 5 years ago, Happy would have caught it. Maybe. वो शायद effort इस साल भी बनती थी. He's having a wry smile. Even Mayura has something to say. Yes, but very smartly bowled. We all know that he's a seasoned campaigner, such a smart cricketer. Always wants to be on field. You cannot keep him out of action. Even when he's off field, he's of great help to the organizers, always coordinating, making sure that everything is in place. And he's also a cricket expert who conducts the mid-innings break analysis. Nicely punched away. Such a good piece of fielding and a direct hit. And yes, the kind of celebration that, Happy, maybe not, it's been referred. For run out. Maybe Waiting for the side on angle. some excitement. Okay, the bat is clearly grounded within the popping crease when the bails are dislodged. It's not out. The decision is not out. उत्सव अब 27 गेंदों का सामना करते हुए 5 डॉट शॉट चौकों के साथ अब 34 पर जा पहुंचे. He needs to continue at least और आधा घंटा विकेट पर रुकना है उत्सव ने. The most refreshing part about the team challengers approach tonight has been their will to play the strokes in spite of being in a slightly tight situation. They have not deserted their natural game. That really is the message from the captain. In spite of being in a tight position at times, they have really played their shots. They have played their natural game. A lot of credit needs to be given to team challengers tonight for this wonderful and refreshing approach. That's the way to go about. We are just about getting a campaign started. They've already won the first match. 93 at the end of 11 overs. Dharmin Parikh to continue. Such a wonderful setting out here. Such a beautiful sight under the lights at the Goregaon Sports Club. Getting some good bounce. Because that ball was going to Aryan, the man at the non-strikers end, that is Utsav, said no. Quite the right call. He's a cheetah on the prowl, Aryan, in that region.
Yes, Amol Polke is a very experienced wicketkeeper batsman, and as Vikram Panjwani at the time of the toss mentioned that he was quite happy to get Amol back into the squad. He was unavailable for the first match, but he makes a comeback. He deserves his slot in the team. Goodness me. Of all the people, the man with the wicket-keeping gloves had to drop it. Is indicating that because of that visor of the helmet, he could not sight the ball properly. Maybe could be a genuine thing, but yes, that should have really been pouched. Yes, Utsav survives to fight another day. He lives on. This time, no mistake. A second consecutive false shot, and this time on his way back. Utsav not able to capitalize on the life that he had been presented with. That's Jensen LED lights wicket. Utsav on his way back. Good piece of fielding there by Aryan. In comes Jigar. बिल्कुल आज जिगर को जिगरे के साथ खेलना होगा. जर्सी नंबर तो बिल्कुल 333 ली है. श्री गोपाल जाजू इसके पहले के मैच के बेहतरीन बल्लेबाज. हालांकि मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन जाजू की उस इनिंग्स ने पूरी तरह से मैच के तख्ते को पलटा था. अब भी आने बाकी है. तो यस, अब भी बड़ी उम्मीद है टीम चैलेंजर्स के लिए कि 150 से 160 रन की उस पार जाए. रन रेट तो काफी पुख्ता है. अगर 20 ओवर्स भी इसी तरह से अपना नेचुरल गेम खेलते हुए तय कर जाते हैं टीम चैलेंजर्स, तो मेरे ख्याल में 150 के उस पार जाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी. बाबा की आखिरी गेंदबाजी बाकी इस ओवर में. स्ट्राइक पर नए चले कलाई के सहारे मोड़ दिया. काफी अच्छा कॉल दिया था वहां पर अमोल पोलके ने. बारह ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस वक्त करंट रन रेट 8.08. रन रेट तो काफी सम्मानजनक है. हालांकि एक समय ऐसा था कि लगातार पहले 9 या 10 ओवर्स में 9 के ऊपर का रन रेट था, लेकिन अब वो रन रेट थोड़ा सा नीचे आता हुआ. लेकिन अगले 2-3 ओवर्स तक रन रेट की तरफ नहीं देखना है. 15 ओवर के बाद शायद गौर फरमाएंगे रन रेट पर. Yes, sir. Warm welcome to Satish Agarwal, sir. As always, one of the biggest supporters of cricket at the Goregaon Sports Club. A senior personality is always there to support us. Satish Agarwal ji. Yes, happy to continue. The man on strike.
Jigar. Straight away off the mark. A big thank you to all our sponsors. Parik Group for having sponsored the Sixers. Body First for the man of the match hampers. Shakti Corporation, Sigil Realty, Edelweiss, Jensen LED Lights for having sponsored the DRS and the wickets. Gajjar Group for sponsoring the man of the match gifts. Dot Shot for sponsoring the boundaries. Zig Sports Studio for sponsoring the gift vouchers. And yes, last but not the least, Hex. Big thank you to all our sponsors. अठानवे रन उस सिंगल के साथ। गुड इवनिंग चेतन भाई, आपका तहे दिल से स्वागत है। इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डॉट शॉट चौके के साथ 100 रन्स अप ऑन द बोर्ड फॉर टीम चैलेंजर्स। एक बेहतरीन फाइट बैक, बहुत ही सूझबूझ के साथ टीम चैलेंजर्स की इनिंग्स अच्छे लक्ष्य की तरफ प्रस्तापित होती हुई, मार्ग प्रशस्त होती हुई। अच्छी गेंद, केवल दिशा दी गेंद डिपिश गली पर खड़े पनारा के पास। बड़ी आसानी से 1 रन प्राप्त किया, 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक अमरकांत ने 27 रन से दिए हैं, उनके स्पेल में 2 गेंदानी बाकी है। सुनहरा माहौल इस वक्त बना हुआ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर, काफी अच्छी तादाद में सभी दर्शक भी मौजूद इस अच्छे क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हुए। जबरदस्त शॉट, सही दिशा में उस लूज गेंद को पहुंचाया, पारिक ग्रुप छक्का। बहुत ही शानदार टाइमिंग, गेंद थोड़ी सी खराब थी क्योंकि रूम दिया था, पूरी तरह से सटीक फायदा उठाया जिगर ने। बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हम सभी जानते हैं, उनकी फितरत में ही आक्रामक खेलना है। थोड़ा सा रुक कर खेलना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा, एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी जिगर ने। थोड़ा सा पिछले लेकिन अच्छी टाइमिंग, वहां पर कोई भी फील्डर इनसाइड द सर्कल मौजूद नहीं, जिसके चलते कोई भी खतरा नहीं। बड़ी आसानी से 1 रन मुकम्मल हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम चैलेंजर्स ने 110 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े किए, 5 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.46। बयालीस गेंद बाकी है और इन 42 गेंदों में कम से कम 65 रन और जोड़ना चाहेंगे। 60 से 65 रन कम से कम, मैक्सिमम की सीमा में नहीं दर्शाना चाहूंगा, लेकिन कम से कम 160 के आगे तो जाना चाहेंगे ही विक्रम पंजवानी। चले, अब बाबा अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर 2 विकेट्स लिए है। बाबा ने अब तक 22 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट्स बाबा के खाते में। एक बहुत ही शानदार कैच अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही अच्छा कॉटन बोल्ड भी लिया है। कितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस पर काम करते हैं बाबा।
अगर इस तरह का बड़ा क्रिकेट सीजन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर न होता तो बाबा के साथ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स है तो जो शायद अपने फिटनेस रूटीन को सीरियसली न लेते। गगनचुंबी शॉट, गेंद निकली है हवा यात्रा पर, पारिक ग्रुप छक्का लगा है वहां पर, मिड विकेट फेंस के ऊपर से गेंद निकली, कोई मौका नहीं, बड़ा तगड़ा कनेक्शन। जिगर, बिल्कुल बड़ा जिगरा दर्शाते हुए, और क्यों नहीं, शानदार बल्लेबाज है, सक्षम में काबिल है, अपनी रंगत में आकर बिल्कुल अच्छी सटीक बल्लेबाजी करते हुए, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर फॉर टीम चैलेंजेस। Superb approach, great attitude, just about the right kind of cricket that was really expected from somebody as experienced as Jigar. Way to go. और ये शायद साइड नहीं हुआ, पता नहीं, अच्छे फील्डर है, पहले ही नीचे चले गए थे। अगर स्टार्ट लेते एक या दो कदमों का और आगे छलांग लगाते, उनकी हाइट भी काफी ज्यादा है। चले कोई बात नहीं, डिफिकल्ट चांस था। रन संख्या थमी हुई 116 पर। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन दूसरे रन को लेने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 2 रन से जरूर बचा है। 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Warm welcome to Ujwal. A fantastic player, Ujwal Goel. चौदह ओवर के बाद 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हमारे अंपायर्स किरण पुरंदरे और प्रथमेश आंगणे ऑन फील्ड। थर्ड अंपायर के रूप में अभिषेक कुवैत पाठक। 3 युवा प्रतिभाशाली अनुभवी अंपायर्स। बाबा ने अपने 4 ओवर्स के निर्धारित स्पेल में 30 रन देकर 2 विकेट्स लिए। मौका मिला था, हाफ हार्टेड शॉट, 100% एफर्ट नहीं लगाई थी, खतरनाक साबित हो सकता था। मौका था पार्थ के पास, और इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, इस तरह के कैचेस अपने हाथ में चिपकते हैं। 100 मिनटों में आपको खत्म करना है आपके निर्धारित 20 ओवर्स। काफी शॉट, अपने बल्ले के फेस को खोला, बैकफुट पर थोड़ा सा फोर्सफुल शॉट लगाया। 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए, पार्थ को अपना ये विकेट प्राप्त हुआ। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, मिस कर गए लाइन। यू मिस, आई हिट, जेनसन एलईडी लाइट्स। विकेट मिलता हुआ पार्थ को। चले, अब हम सभी के चाहते
श्री गोपाल जाजू। यस, अविनाश भाई का हम स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग। शानदार शुरुआत जीएससी 2020 के लिए 1 नवंबर को ये शानदार इवेंट शुरू हुआ। आज का ये डे नंबर 7। हर मंडे हमारा मेंटेनेंस डे है, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो केवल कल एक छुट्टी मिली। नॉन स्टॉप क्रिकेट महोत्सव इस वक्त अंडर द लाइट्स गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में 4 महीनों तक लगातार अव्वल दर्जे का क्रिकेट देखने को मिलेगा। बेहतरीन स्टैंडर्ड, सुपर्ब क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। Yes, definitely GSC 2020 is becoming the most awaited outdoor sports events at the Goregaon Sports Club. The GSC 2020, one of the most awaited events. Yes, 45 plus is the signature event of Goregaon Sports Club, the biggest advertisements for 45 plus cricket in the city of Mumbai. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के 45 प्लस से क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए काफी लोगों ने इस तरह के 45-50 प्लस के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, लेकिन बेंचमार्क 45 प्लस क्रिकेट के लिए सेट किया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने। जब कभी 45 प्लस या 50 प्लस क्रिकेट की बात होती है मुंबई शहर में प्रोफेशनल क्रिकेटिंग सर्कल्स में, तब सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब। अंशुल जैन जी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम। हिमल भाई दवे का भी स्वागत करूंगा। ये सभी हमारे सीनियर क्रिकेटर्स और गुड स्पोर्ट्स पीपल, गुड स्पोर्ट्समैन। डाउन द लेग साइड। चलिए अंपायर के कॉल की प्रतीक्षा करेंगे। वाइड के रूप में 5 रन मिले। गेंद डॉट शॉट बाउंड्री तो निकली, क्योंकि एक वाइड का इशारा किया था। 5 रन मिले वाइड के रूप में। रन संख्या तेज गति से बढ़कर अब 125 रनों पर। वेलकम रन्स। इस तरह की स्थिति में एक एक रन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। समांतर स्थिति में इस वक्त ये मैच, किसी के भी पलड़े में ये मैच जा गिर सकता है। इन अ बैलेंस दिस मैच कुड गो ईदर वेज। एक 126 रन 15वें ओवर में, आखिरी गेंद पानी बाकी। इनसाइड आउट शॉट, बेहतरीन शॉट, पारिक ग्रुप छक्का। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से श्री गोपाल जाजू के सामने जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे जिगर, बहुत ही शानदार शॉट लगाया जिगर ने। 15 ओवर के बाद 132 रन 6 विकेट के नुकसान पर शानदार बैटिंग करते हुए जिगर 24 रन पर जा पहुंचे हैं। 13 गेंद खेले और तीनों ही पारिक ग्रुप छक्के जिगर के बल्ले से।
हिमल दवे से जब 2 दिन पहले मेरी बातचीत हुई तब मैंने सिर्फ उन्हें पूछा कि हिमल भाई कब खेलोगे आप, तो बोले आई एम जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, यंगस्टर्स को खेलने देते हैं, जब कभी मौका मिलेगा तब आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई एम जस्ट हैप्पी टू बी ऑन द क्रिकेट फील्ड। कितना बेहतरीन जवाब दिया हेमल भाई ने कि यंगस्टर्स को आगे आने देंगे। क्या प्लेयर है हेमल भाई, जबरदस्त बल्लेबाज, काफी सटीक गेंदबाज और फील्डिंग करते हुए भी 100% लगाते हैं, टोटल पैकेज हेमल दवे। जुगराज मेहता इज हियर। चलिए यस, फार एंड की तरफ से आर्यन, स्ट्राइक पर श्री गोपाल जाजू। एक 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस 16वें ओवर में एक गेंद आनी बाकी है। गेंदबाजी करते हुए आर्यन और स्ट्राइक पर इस वक्त जिगर। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद चीरती हुई निकली, कोई मौका नहीं, डॉट शॉट बाउंड्री, 139 रन। जिगर शाह की इस इनिंग्स की हम जितनी बात कर रहे, इस बीच परमिंदर भामरा जी का भी मैं स्वागत करूंगा, जितनी तारीफ करे उतनी भी कम होगी। 16 ओवर के बाद 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पार्थ अपना आखिरी ओवर लेकर कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से, आर्यन के लिए भी और एक ओवर आनी बाकी है।
हवा यात्रा पर गेंद निकली है, बेहतरीन कैच लेने का प्रयास किया, बिल्कुल गेंद के नीचे सटीक तरीके से आए थे, एन वक्त पे गेंद हाथ से निकली, शायद इंजरी भी हुए, देखना होगा। एक 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आयन थोड़े से डिस्कंफर्ट में है और एवरीबडी इज अटेंडिंग टू हिम। आर्यन ही नहीं, जब कभी किसी भी कोई प्लेयर को थोड़ी सी इंजरी लगती है या कोई थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में होता है, तब सभी सीनियर्स, विशेष रूप में करण भाई वाली और सभी लोग तुरंत ही उस इश्यू को एड्रेस करते, मेडिकल अटेंशन मुहैया कराते हैं। चलिए, आई एम श्योर दैट आर्यन विल सून बी ओके। गोली की रफ्तार से गेंद निकली, मौका था एविन के पास, लेकिन एविन के बगल से गेंद बड़ी तेज रफ्तार से निकली। बहुत ही बढ़िया डॉट शॉट बाउंड्री। श्री गोपाल जाजू, हम जानते हैं कि श्री गोपाल जाजू क्या कर सकता है। 147 रन। जितनी तारीफ करे टीम चैलेंजर्स के बल्लेबाजी रवैये की, उतनी कम होगी। विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद अपने नेचुरल गेम खेलने से एक भी बल्लेबाज नहीं कतराया है। फलस्वरूप एक बहुत ही सम्मानजनक लक्ष्य इस वक्त बोर्ड पर नजर आता हुआ। ये बहुत ही अच्छी सोच, रिफ्रेशिंग अप्रोच। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2 या 3 विकेट्स खोए तो बिल्कुल शेल में चले जाते हैं, लेकिन इस टीम ने आज बिल्कुल एक अलग किस्म का रवैया अपनाया है और बिल्कुल ये सोची समझी रणनीति है कि हम किसी भी स्थिति में अपने नेचुरल गेम को बिल्कुल खेलेंगे, विस्फोटक खेलने की कोशिश करेंगे और फलस्वरूप काफी अच्छा लक्ष्य इस वक्त स्कोरबोर्ड पर है। बढ़िया बैटिंग। 17 ओवर के बाद 148, 6 विकेट के नुकसान पर। 100 मिनटों में आपको आपके निर्धारित 20 ओवर्स को मुकम्मल करना है।
और इस बीच हम हमारे मेडिकल सेल के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल साहब का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर एमजी अग्रवाल, 150 runs up on the board in good time। डॉट शॉट चौके के साथ रन संख्या अब 152 रनों पर। काफी डॉट शॉट चौके लगे हैं, काफी पारिक ग्रुप छक्के भी लगे, विशेष रूप में जिगर के बल्ले से। यस, चलिए बेहतरीन शॉट, बहुत ही लंबी गई और ऊपर भी गई, हवा यात्रा पर गई, मिड विकेट फेंस के ऊपर से गेंद चली चली और चल पड़ी। 6 रन्स मिले, पारिक ग्रुप छक्का, 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद पर अब मानो ये मन बना लिया है कि मैं प्रहार करूंगा, विस्फोटक खेलते हुए, टॉप गियर में खेलते हुए, केवल मात्र बस अब एक ऐसा विकल्प के करीबन हर गेंद पे अब प्रहार करो। शॉट इन लेन, गेंद डॉट शॉट चौका, बेहतरीन टाइमिंग। जाजू बताते हुए कि मेरे पास 360 डिग्री रेंज ऑफ शॉट से, ना केवल मैं लॉफ्टेड शॉट्स खेलता हूं, ना केवल मैं लेग साइड पे खेलता हूं। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि ऑफ साइड पे खेलना हो, बैकफुट पर खेलना हो, तो वो शॉट्स भी मेरे आर्मरी में है। बढ़िया बैटिंग, क्या बात है, बहुत ही सम्मानजनक। लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ती हुई टीम चैलेंजर्स। प्रियांक थोड़े से प्रेशर में और एक डॉट शॉट बाउंड्री। इस वक्त मानो जाजू को बांधे रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। युवा प्रतिभाशाली प्रियांक जैन के लिए एक सीख यहां पर। बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाज है, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। हम सभी जानते हैं कि जाजू क्या कर सकता है। देखिए कितने सही वक्त पर विक्रम ने जाजू को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 विकेट गिरने के बाद शायद जाजू आएंगे, लेकिन बहुत ही सटीक पोजीशन में, बहुत ही सटीक समय पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा है जाजू को। और देखे किस तरह से अपने बल्ले से रनों का सैलाब इस वक्त बहता हुआ पूरी तरह से अपनी रंगत में आकर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के तरफ गई थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। केवल 2 रनों के साथ समाधान प्राप्त करना होगा। 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल हर बंदिश को तोड़कर एक तूफानी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं श्री गोपाल जाजू। क्या ये सीजन श्री गोपाल जाजू अपने जलवे बिखेरेंगे, देखना होगा। पहले 2 मैच में तो सभी को एंटरटेन किया है। क्या प्लेयर है जाजू, बहुत ही बढ़िया, नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर, नेचुरल प्लेयर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा विश्वास अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर। थोड़ा सा जाजू से गेंद को लंबा रखा, अच्छी सोच, मिस कर गए। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 18 ओवर के बाद 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंद आने बाकी और जिगर शाह और श्री गोपाल इस वक्त टीम चैलेंजर्स के लिए जद्दोजहद करते हुए कि किस तरह से हम अपनी टीम को 180 या 190 के उस पार ले जाए। ये पार्टनरशिप 21 गेंदों में 48 रन ये पार्टनरशिप स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर चुकी है। चलिए अविन पटेल अब गेंदबाजी का भार संभाले हुए।
कहीं पर भी मत जाइएगा। ऐसे आसार इस वक्त उभर कर आते हुए कि ये मैच तगड़ा हो सकता है, आखिरी ओवर तक बिल्कुल जा सकता है, ऐसा बिल्कुल इस वक्त प्रतीत होता हुआ। तो कहीं पर भी मत जाइएगा। इस मैच में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलना बाकी है, किसी के भी पलड़े में ये मैच जा गिर सकता है। चलिए, ये कैच भी नहीं। आज टीम वॉरियर्स की फील्डिंग बहुत ही साधारण रही है, साधारण से भी नीचे। A bad day in office maybe. They are generally a good fielding side, but it happens once in a while. चलिए, अच्छी गेंद, थोड़ा सा जल्दी खेल लिया। रेयर मिस। ज्यादातर इस तरह से सेट होने के बाद अपने शॉट्स को मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच डॉक्टर एमजी अग्रवाल सर, द चेयरमैन ऑफ द मेडिकल सेल। दीपेन पटेल भी पैडअप होके रेडी है और चाहेंगे कि उन्हें बल्लेबाजी करने का अवसर न मिले, यही सोच होगी, क्योंकि दो दिग्गज बल्लेबाज इस वक्त काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। गति में परिवर्तन किया, सफल रहे, बीट हुए वहां पर जाजू। इस बीच प्रसाद करकेरा का हम स्वागत करते हैं। अच्छा शॉट और बड़ा अच्छा एफर्ट वहां पर, रिकोशेट हुई, फलस्वरूप डॉट शॉट बाउंड्री मिली। रन संख्या बढ़कर अब 173 रनों पर 173 फॉर 6। बहुत ही अच्छे लक्ष्य की तरफ ठोस कदम उठाती हुई टीम चैलेंजर्स हवाई यात्रा पर निकली है गेंद, और ये अच्छा एफर्ट। जब आर्यन जैसे फील्डर के हाथों में वो कैच नहीं रुक रहा है, तो आप सोचिए कि आज किस तरह का समा बंधा हुआ है टीम वॉरियर्स के लिए। जबरदस्त टाइमिंग, और इस मर्तबा आखिरी लम्हों में, आखिर में कैच लपका है, कैच लिया है टीम वॉरियर्स ने। बाबा ने, धर्मेंद्र पारिक ऑफ ऑल द पीपल, क्या बात है, सीनियर क्रिकेटर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया।
एक बहुत ही बेहतरीन योगदान करने के बाद वापस आते हुए जिगर, बहुत ही बढ़िया कैच लिया रोहित ने वहां पर। इतना आसान नहीं था जब लगातार टीम वॉरियर्स एक के बाद एक कैच छोड़ रही है। ऐसे हालात में इस तरह का थोड़ा सा चुनौती भरा कैच, अच्छी एफर्ट। 54 रनों की पार्टनरशिप, उस बेहतरीन कैच के चलते फुल स्टॉप लगा उस पार्टनरशिप को, स्पीड ब्रेकर लगा। गौरव देवली अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। अब इस इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदबाजी है। 174 रन 60 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही अच्छी स्थिति में। लेकिन जब आप टीम वॉरियर्स जैसी चैंपियन टीम के सामने आप बल्लेबाजी करते हो तो जितने रन्स आप बनाओ उतने शायद कम भी हो सकते, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा रन्स इस आखिरी 6 गेंदों में बटोरने होंगे। आज थोड़े से ऑफ कलर है आर्यन। अगर मैं उनकी गेंदबाजी की बात करूं, फील्डिंग की भी बात करूं, तो जिस बड़े बेंचमार्क को प्रस्तावित किया है आर्यन पटनी ने, उस लिहाज से थोड़ा सा ऑफ कलर आज। चले सीधा सीधा फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री, वो दूसरा रन बिल्कुल बनता है इस तरह के हालात में। अगर रनआउट के रूप में उस छोर पर अगर विकेट भी गिरती है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 रन मुकम्मल किए। 176, 5 balls to come, the final 5 balls. Aryan to bowl to Jaju. Jaju is already on to 36 of just 20 balls with the help of 5 dot shot boundaries and 1 Pari Group 6. देखिए बिल्कुल ये उनके मन में, उनने आर्यन ने निर्धारित किया है कि मैं फ्लैट गेंदबाजी करूंगा, शॉर्ट इन लेंथ गेंदबाजी करूंगा। जाजू को उनके रेंज में मैं एक भी डिलीवरी नहीं करूंगा। ये बिल्कुल निर्धारित किया है आर्यन ने। 177 स्ट्राइक पर अब गौरव गौरव देवली। बढ़िया शॉट, स्मार्ट शॉट, गेंद एक्स्ट्रा कवर रीजन में गई। वहां पर केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा क्योंकि स्ट्राइक जाजू अपने पास रखना चाहते हुए, सही सोच, यही करना चाहिए था भी। चले 178 फॉर 7। 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब इस इनिंग्स की आखिरी 3 गेंद आनी बाकी है। चलिए अब जाजू क्या करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। मैंने पहले ही बताया कि लगातार शॉर्ट पिच गेंदों को करने का ये फैसला लिया था और सफलता उनके हाथ लगती हुई। यस, गुड इवनिंग। दक्ष अग्रवाल इज हियर। इन वॉक्स द न्यू मैन मोनिश। Yes, it's been such a good season for the youngsters. In the first 6 matches, the youngsters have really performed so well. Most of the star players, especially the top order batsmen, are coming into the elements. It's been a good start here, really, for most of the top order batsmen across all teams. Nicely worked away, giving that strike to Devli. The final ball to come, 179.
Team challengers would be wanting to end this innings with a flourish, maybe a dot shot boundary or even better, party group 6. A man stationed in the deep. Will they go for that second run? We'll wait and watch. Here we go. And it's been referred into the third umpire box. Okay, there's an appeal for run out. Waiting for the side on angle. Jensen LED lights. Yes, looks, may I request Karan Bhai Walia to conduct the mid-innings break if he's game for it. Okay, the bat is grounded behind the popping crease. When the bails are dislodged, the batsman is not out. The batsman is not out. Yes, 181 for 8. The score at the end of the stipulated 20 overs of team challengers. They were asked to bat first, and indeed, I really must say that this is such a good score on the board. And if Aryan Patni and his team warriors have to go past that 181 run mark, they'll indeed have to play such a good brand of cricket here. And may I invite Daksh Agarwal and Ujjwal Goel to please step on to the field for the mid innings analysis. Yes, so may I request King Shuk Rai to also join us for the mid innings analysis.
Yes, good evening, ladies and gentlemen, and warm welcome to the mid-innings analysis session. I have with me the captain of Team Team Gangsters. We all know he's such a giant of a player, King Shukrai, and yes, up and coming, very talented Ujjwal Goel from Team Chargers. First and foremost, we start with King Shukrai. किंगशुक इस मैच के टॉस को जीता था टीम वॉरियर्स ने और उन्होंने आमंत्रित किया टीम चैलेंजर्स को कि वे पहले इस विकेट का बतौर बल्लेबाज उपयोग करे। शुरुआत में 2 या 3 विकेट्स जल्दी गिरे, उसके बावजूद 181 रनों का एक अच्छा लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर खड़ा किया। क्या कहेंगे इस फर्स्ट सेशन को? हाउ विल यू समराइज दिस फर्स्ट सेशन? आई थिंक इनका फील्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था और बॉलिंग फिर भी ठीक था, बट फील्डिंग इतना ज़्यादा ख़राब था कि उन्होंने बॉलर्स को बैक नहीं किया। एंड जैसे बैटिंग इन्होंने 180 किया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। और विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रहे थे, बट ये दे कुड नॉट कैपिटलाइज द वे दे वांटेड। सो आई गेस वो उस वजह से इतने रन्स बन गए, नहीं तो अगर वो कैचेस इन्होंने लिए होते तो आई डोंट थिंक 140 के ऊपर जाता। Yes, he's a soft man, but then the next time when you have the mic in your hand, you got to really raise your voice just the way you raise your batting tempo. Yes, now over to Daksh. Yes, Daksh, one thing I really noticed as far as team challengers was concerned, that in spite of losing wickets, they didn't desert their natural game. They really kept playing the strokes, and the bat fielding by Team Warriors really helped their cause, the cause of team challengers, and a good score on the board. I think hats off to the captain of Team Challengers. You know, it's difficult for a captain to keep a batsman like Shri Gopal Jaju waiting till the end. He came in at number 7 or at number 8. So that's really good thinking and a good strategy there, because that is what you expect from a batsman like Shri Gopal Jaju. A good 25-30 of 10-15 balls with a strike rate of more than 200 is actually what got them to 180. But if you see in the entire innings, there was a pattern. That pattern was a batsman is coming in, he's scoring runs, catches are being dropped, again he's scoring runs, and then he's getting out. So all the runs that have been put on the board, I think team challengers capitalized on the number of lives they got, but the fielding could have been probably 10 or 15 times better to have reduced this target to a probably a 120 or a 130 with the kind of start they got. They got all 3 huge wickets, Rahul Bhaiya, Vicky Bhaiya and Vedant's wicket, which was very unfortunate. So I think Warriors could have capitalized in a 10 times better way. Yes, just about perfectly that you really summarized the first session. Now we have with us an X-Factor player, Ujjwal, one of the key links as far as Team Chargers is concerned. Ujjwal, the last season was absolutely fabulous for you. And this season, just 2 matches, we still have a long way to go. But you've not found your rhythm. You're not in great touch. So maybe, how are you going to come back? Like you said, it's not about great touch. We've played 2 matches in which one match I've not got batting, but I bowled well. Second match, yeah, I did a couple of dot balls, but that's fine. I'm learning. And definitely the captain is backing me, so I don't think I'm worried about it. So I don't think there's too much pressure coming from outside. Either the commentators or outside talking, it really doesn't matter to me. Well said. And yes, so we really expect somebody like you to challenge the top 7 guys. We really are rooting for you, and maybe you find that slot in that Feb 7 of the Goregaon Sports Club. I'm going to be making that list. Definitely, when it comes to the Fab 7, all of them are established players. All of them are playing Kanga League, Purushottam. But I don't think I compete with them. I'm competing with myself, improving my game by the matches come. So a good knock here and there will help my team win, definitely. So that's the point. Yes, perfect. किंगशुक, क्या कहेंगे कि आप इस मैच में कौन सी टीम के पास ज्यादा चांसेस है कि ये एकदम क्लोज मैच हो सकता है कि एक तरफा मैच होगा? वो आई गेस शुरू के कुछ फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले में डिसाइड होगा, बिकॉज एज द जैसे वॉरियर्स का बैटिंग स्टार्ट होगा और वो कैसे विकेट्स हाथ में रखते हैं, तो वो डिटरमाइन करेगा कि कैसे ये चेज और कैसा ये मैच एंड होगा। इस टूर्नामेंट के शुरुआत में किंगशुक काफी यंगस्टर्स ने पहले 6 मैचेस में, आज डे नंबर 7 ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ज्यादातर सभी टीम्स के लिए जो 2 या 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. दे सीम टू बी इन गुड फॉर्म क्वाइट अर्ली इन द टूर्नामेंट. So it's raining boundaries and sixes, and we are looking at some good totals being put on board.
एक्चुअली ये जितने भी यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है, ये इन्होंने ऑफ सीज़न में बहुत मेहनत की है, जो मैंने खुद ने देखा है। और ये इनका फिटनेस और जितना भी टैलेंट, बैटिंग बॉलिंग स्किल है, इस पे काफ़ी हार्ड वर्क किया है। और इनकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की थी, तो वो इनको इधर उसका अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। Kingshuk has mentioned, he's given credit to the off-season hard work that these youngsters have put in, and it is courtesy that hard work that they are reaping in the dividends. Any anything else you would want to add to what Kingshuk has said about the youngsters coming up the ranks and putting up a great show? I think this tournament is majorly for nurturing the talent that the club has. We as youngsters, we don't. This tournament for us is like a confidence booster for us. It gives us a lot of confidence, and it shows us that the club is always backing us to perform in other tournaments, be it any other MCA tournament or the youngsters who don't play any MCA tournament. They play for the club for the MCC tournaments, and we've got around 17 or 19 trophies. So it's really because of the club that they've not let that backing go away. And yes, when it comes to today's match, I think I'll be leaning towards Team Challenger side. Warriors would be missing out on Sakit Bhaiya today, and Challengers, they've got a really good bowling lineup, and they've got good thinking bowlers in Rahul Bhaiya, Vicky Bhaiya, and Vedant. So Vedant's over will be crucial. But yes, with the way Aryan has been performing, he's probably been not out in the last 4 innings where he's played, be it any MCA match or the practice match that he played for Warriors, or even the first match that he played. So he's been not out in the past 4 innings, and I hope he continues that, because that's what I would want from him. I always want him to play his best. But yes, for today's match, I'll be leaning towards Team Challengers. Yes, over the last season and this season also, we have been regularly mentioning that quite a few cricketers like you are not just playing great cricket at the Goregaon Sports Club, but you guys, quite a few of you guys are really playing some top grade cricket in Mumbai, and we really wanting to see some of you play for the Mumbai team, the under 19, the under 23, maybe the Ranji Trophy. This year it's going to be a big Mumbai Premier League coming up. I'm sure at least 3 to 4 guys from the Goregaon Sports Club would be playing for the MPL. So किस तरह की तैयारी है कि are the guys knocking on the doors of the top level grade in Mumbai? For sure, with the way Aryan played his last game, that was the most dominating innings that I've seen any GSC player perform at an MCA level. Scoring a 95 not out was not an easy task against such a quality bowling lineup and a team like Police Gymkhana. Yes, we do look to perform. Yes, all these tournaments do matter for us. At the end of the day, what we want is we want to play for Mumbai, we want to represent the state and go another step higher. So all these matches, they bring us a lot of confidence in us. And yes, we've been performing well, as Kinshuk Bhaiya said, that we trained really hard in the off season. That time is the time for ourselves. That time is where we don't lose focus. And because there is no outdoor cricket, everyone's irritated. And this year there was an extra month with the entire month of October having rains. So yes, we've prepared well. We do look to knock onto the doors of any Mumbai team or the MPL, as you said. Thank you, and here's wishing you guys. We are going to be always rooting for you people, especially the young players of the Goregaon Sports Club. May you make it to the top grade cricket. And here's once again, before I let you go, these are the 3 stalwart players of the Goregaon Sports Club. 3 fantastic players, and the kind of start that this season is off to. I'm sure that this event will indeed be one of the best blockbuster seasons at the Goregaon Sports Club till this point in time. This is history in the making. Thank you. Once again, we connect with you in the next 10 minutes with live action. Thank you, Ujwal. Thank you, Kingshuk. Thanks, Daksh.
Hello. Yes, Mr. Kaushik Mehta all set with the white new ball. Yes, he's got that white lady in his hands. He himself is in a white attire today, and it's going to be Kiran Purandare to take that white ball away from Kaushik Mehta to get the proceedings of the second half of this innings to get underway. 182 runs to win this match. Definitely not a mountain to climb, but indeed a challenging ask in front of Team Warriors. As Daksh Agarwal mentioned, that looks like they will miss Saket, but remains to be seen. I'm sure that the message from Aryan will be loud and clear that this is not a team of individual stars. We are a collective bunch of superb cricketers. We gel like a team. We play like a cohesive unit. We are not going to be missing one or two players. We play as a unit. It's all about team game. चलिए इस बीच हमारे सभी स्पॉन्सर्स मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पारिक ग्रुप जिन्होंने को स्पॉन्सर किया है बॉडी फर्स्ट इनके तरफ से भी मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं शक्ति कॉर्पोरेशन सेजल रियल्टी इडलवाइज जेंसन एलईडी लाइट्स जिन्होंने पहली बार जो हम लोगों ने डीआर सेटअप को स्थापित किया है उस डीआरएस सेटअप और विकेट्स को स्पॉन्सर किया है जेंसन एलईडी लाइट्स ने गज्जर ग्रुप हर साल की तरह इस साल भी हर इवेंट में गज्जर ग्रुप की तरफ से गिफ्ट स्पॉन्सर होते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए जिग स्पोर्ट्स स्टूडियो जिनके तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट वाउचर्स एंड यस हेक्स अ बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स Yes, the man on strike, Sagar Uchil, to give him company, and the non-strikers and Aryan. And with the new ball to operate from the commentary box, and it is the old warhorse, Munish. 181 runs to defend. Should be very interesting as King Shuk mentioned that the first 5 to 6 overs, the first power play session will have a big impact on which way this match goes. It could go either ways. Starts off with a delivery down the leg side. Of late, Sagar Uchil has really tasted some reasonable success.
The last season was a prolific one for him, especially the second half of the season. Now that he's tasted success, he is more hungry for runs. Slightly unorthodox with his approach and batting. This has all the makings of a cliffhanger of a match. This could go right down to the wire, could be a very evenly contested match, and please do not go away because this is headed for a exciting finish. And yes, we really need to laud and applaud the spirit of Aryan Patni. We all know that he's slightly injured. He's in a little bit of discomfort. It's a long season. Nobody would be wanting to take a risk, especially when you are knocking on the doors of Mumbai cricket and when you are in such good touch. But still, all for the team. So very strong in the mind. He's got matured so soon before his age, but the best part of his game is his mental strength, the belief in his potential. Mind-blowing. That's the way Sagar Uchil plays. Soft dismissal, nicely taken that catch. Well bowled by Monish. The first Yes, indeed. Monish has drawn first blood. Such an important wicket, that of Sagar Uchil, because we all know that Sagar can always come out and play a quick fire innings. That is his natural game, 30, 40, 50 quick innings of say 20 balls, 25 balls, 50, 30 balls, 60. That's the way he plays. The new man in, Avin Patel, the left-handed batsman. This is a big opportunity. I will not, I'll not say that this is a challenge. In fact, I would rather mention that this is an opportunity for Avin to come and showcase his talent on this big stage. The fact that he is coming in at the number 3 spot in this kind of a formidable lineup really says it all. Definitely in this lineup, if you are holding that number 3 position, we all know that you are such a good player. You just need to play to your potential. Here we go. No, 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 says Monish. Pitching outside the leg stump.
चलिए, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना है कि अब कप्तान विक्रम किसे इस नई गेंद को सौंपते हैं। वेदांत गाड़िया को शायद गेंद सौंपी है, लग तो ऐसा ही रहा है। यस, बिल्कुल सुनिश्चित होता हुआ कि फार एंड की तरफ से वेदांत गाड़िया गेंदबाजी का भार संभालेंगे। आज दुर्भाग्यवश ग्राउंड पर स्लीप हुए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक डॉट शॉट चौका भी लगाया था, स्लिप होने की वजह से वहां पर रनआउट हुए। देखना है कि किस तरह से इस मैच में अब उस छोटी सी इनिंग्स की भरपाई करते हैं। बतौर गेंदबाज एक टेरिफिक ऑलराउंडर है वेदांत, जिन्होंने मुंबई अंडर 19 का प्रतिनिधित्व किया है और अब भी टॉप ग्रेड क्रिकेट खेलने का एक बड़ा अवसर इस सीजन में प्राप्त होगा वेदांत गाड़िया को। और इस तरह के मैचेस बिल्कुल सही मायनों में ये प्लेटफॉर्म है, जैसे दक्ष ने बताया कि हम इस तरह के मैचेस को बहुत सीरियसली ट्रीट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के मैचेस में हम अच्छे फॉर्म में आए, अच्छा क्रिकेट खेले, ताकि जब हम बाहर टॉप लेवल क्रिकेट खेलने जाए तब अच्छे फॉर्म में रहे। हम बिल्कुल ये प्रार्थना करते कि हमारे 3 या 4 प्लेयर्स बहुत ही जल्द मुंबई के लिए खेले, और एमपीएल में तो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के 3 या 4 प्लेयर्स ने स्क्वाड्स में होना बिल्कुल जरूरी है। बहुत ही बढ़िया गेंद, ना केवल बल्लेबाज बीट हुआ लेकिन विकेट कीपर की बीट हुआ। विक्रम ने दौड़ लगाई लेकिन द बॉल हैज इनफ गैस ऑन इट टू गो पास्ट द बाउंड्री लाइन। बहुत ही बढ़िया गेंद, 4-22 रन्स मिले, यानी कि चौका 22 के रूप में मिला, डॉट शॉट चौका, डबल फिगर्स में सीधे सीधा। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बढ़िया टाइमिंग, कोई मौका नहीं कि उस डॉट शॉट चौके को रोक सके। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी लूज गेंद थी और सही दिशा में और सही अंजाम तक पहुंचाया बल्लेबाज अविन पटेल ने, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। चलिए, ये शॉट अविन को काफी कॉन्फिडेंस दे जाएगा। और इस बार कोई गलती नहीं की विक्रम ने। आज विक्रम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अपनी कप्तानी को लेकर, बहुत ही बढ़िया कप्तानी। फर्स्ट स्लिप में वहां पर अपने आप को पेश किया था, बड़ा आसान कैच नहीं था, आसान लगा उस कैच को, इतनी अच्छी एफर्ट थी। दैट बॉल वाज ट्रैवलिंग, बहुत ही बढ़िया कैच। पूरा दारोमदार अब आर्यन पटनी के सक्षम कंधों पर। बिल्कुल हुक्मी का है आर्यन, हम सभी जानते हैं कि वो विक्रमादित्य तीर है जिससे किसी भी दुश्मन को यहां पर हम धाराशायी कर सकते हैं। वजीर आजम है आर्यन पटनी अपनी टीम के लिए, कोई संदेह नहीं। The last season he was in such good form that whenever he was coming on to bat, always looked like that he would come up with a blazing half century at least. There was always a buzz in the air when Aryan Patni walked down to the wicket last year, and more often than not, he defied all logic, he defied all odds to come up with consistent performances, match after match, innings after innings, season, event after event in the last season. And he would really want to be continuing in the same vein. He is such a good player. In the off season, these guys have really worked hard, as King Shuk rightly mentioned, and they are better cricketers.
Nicely played, getting behind the ball in such a balanced way. The new man in is Vicky Goenka. Very well bowled. He's on a song here tonight. He seems to be very purposeful in his bowling. He is bowling with a positive intent to Vedant. The 2 wickets down to top order batsman back in the hut. The ball keeping slightly low. What a fabulous shot there. Supremely timed into the gap. The placement absolutely spot on. Dot shot boundary takes the score to 19. Just the way team challengers were playing their strokes in spite of losing wickets at regular intervals, the same way team warriors, in spite of having lost to top order batsmen, continue to play the shot. That really is the bottom line as far as this match tonight is concerned. Never mind the situation, play your natural game. And yes, it is the old warhorse, one of the finest senior cricketers at the Goregaon Sports Club. What a huge player, what a huge reputation he has made for himself at the Goregaon Sports Club. In comes left arm round the wicket, Dipen Patel. The first match was pretty ordinary by the high standards set for himself by Dipen, the benchmark that is set. Going by that, that was a pretty ordinary match, first one, and tonight he would really like to make amends because we hardly see Dipen Patel off colour. We are used to seeing Dipen in good touch. We are habituated to see him in fantastic touch, whether it be with the ball or the bat. 100% commitment in the field. Such a big player, Dipen. अगर आपको सही मायनों में किस तरह से क्रिकेट गेम को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, तो बस आप जब कभी मौका मिले तब दीपेन पटेल के साथ बातचीत करते रहिए, उनसे प्रश्न पूछते रहिए. बहुत सारे प्रश्नों के जवाब सटीक तरीके से दीपेन दे जाएगा. So always try and have a word or two with Dipen. Keep asking him questions and you will be well served, the youngsters. Dipen to Vicky. Tonight, Dipen has got that favorite headband of his, nicely sported. Yes, reminds us of Bjorn Borg, the legendary tennis player. Got into a good position to cut it away, nicely timed, but unfortunately he could not find his placement straight to the man at Dipish Gully. Nicely fielded. Vedant it is. 20 for 2. Aryan, yes, talking to himself, trying to get his focus going, trying to concentrate on the job at hand, job at his hands. The job is cut out for him tonight. It's a huge ask. Yes, a warm welcome to my friend Jayesh Bhai Jogia. Good evening, Jayesh Bhai. तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं. What a passionate cricketer Jayesh Jogia. He just wants to keep playing and playing cricket season after season.
He's working hard on his fitness. Jayesh Jogia. Nicely timed, just a flick of the wrist. Good wristy work. The final ball to come in this over from Dipen. A steady start here. One ball to come. Is given away 3 runs. What a great man to have in your team. Any day, Dipen Patel. चलिए 3 ओवर के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त करंट रन रेट है 7.67, रिक्वायर्ड रन रेट 9.35, 102 गेंदों में 159 रन बनाने की जरूरत। इस वक्त आस्किंग रन रेट की तरफ तो नजर डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जिस तरह के फॉर्म में वेदांत है तो अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे। सफलता उनके हाथ लग चुकी है। हालांकि डॉट शॉट चौका भी दिया था, 9 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, लेकिन एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को पेविलियन वापस भी किया था। Superb piece of fielding, superb piece of fielding there. This is going to be dangerous and जिस तरह का जुबिलेशन इस वक्त वहां पर नजर आता है। चलिए अंपायर ने तो आउट दिया ही है। बल्लेबाज अपने आप पहले ही उन्होंने ये पेविलियन की तरफ निकल पड़े थे। विनीत की जबरदस्त फील्डिंग। यस, हमारे मित्र जीवन राय जी का भी मैं स्वागत करता हूं। जीवन भाई, बहुत सारे 50 प्लस के टूर्नामेंट्स जीवन राय और जयेश जोगिया साथ में खेलने के लिए पूरे मुंबई शहर और आउटसाइड मुंबई भी जाते हैं। जीवन राय एंड जयेश जोगिया बहुत सारे 50 प्लस के टूर्नामेंट्स वो रेगुलरली खेलते हैं। चलिए अब 14 नंबर की जर्सी के साथ उतरे हैं प्रियांक। तीन विकेट्स गिर चुके हैं, लेकिन जब तक आर्यन विकेट पे है तब तक खतरा मंडराता रहेगा, ये कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये टीम सिर्फ आर्यन तक सीमित नहीं है, काफी अच्छे बल्लेबाज भी इनके बैटिंग लाइनअप में है। वेदांत गाड़िया की गेंदबाजी का जादू सर चढ़कर बोलता हुआ। मोनिश वहां पर मौजूद है। इसके पहले के गेंद वापस लौटाए गेंदबाज को, बड़ी आसानी से वो रन मुकम्मल हुआ, जिसके चलते रन संख्या अब 24 रनों पर जा पहुंची है। 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन पेविलियन का रुख कर चुके हैं। पूरा दारोमदार अब आर्यन और उसके साथी बल्लेबाज पर। राहुल जा मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर, बिल्कुल सर्कल के एज पर। अच्छी फील्डिंग,
आखिरी गेंदबाजी बाकी वेदांत की। इतना आत्मविश्वास नहीं था, पता नहीं, चलिए रेफरल लिया है, शायद दिलचस्प हो सकता है, लेकिन फर्स्ट थॉट तो मेरा थोड़ा सा अलग था। लेट्स सी, ओवर टू द थर्ड अंपायर। जेंसन एलईडी लाइट्स। Okay, there's a referral for LBW, checking for fair delivery. Yes, it's a fair delivery. Waiting for the best angle. The DRS setup sponsored by Jensen LED Lights, throwing light on the decision. The tagline for Jensen LED Lights. Okay, ball tracking. Ball is pitched in line, hitting outside almost on the leg stump and missing is what it seems. So umpire, you can stay with your original decision of not out. Fielding side has lost the first review. एफर्ट लगाया, बेहतरीन थ्रो। चलिए, ये है दीपेन पटेल आप सभी के लिए। Okay, there's an appeal for run out. Waiting for the side on angle. Okay, the bat is clearly short of the popping crease when the bails are dislodged. So the batsman is out. The batsman is out.
24 for 4. Yes, Aryan needs to play the innings of his life here. Absolutely capable, but can he deliver the goods here tonight in this kind of a tight situation is the big question here. Superbly bowled, getting some bite off the surface. He's bowling with his tail up. The new man is Pawan Panara, and if he gets going, this ground will be too small, and this run chase also could be accomplished. That good, such a dynamic and an explosive batsman can really hit the ball very, very far. This is Dipen Patel at his very best. This is vintage Dipen Patel. Those wickets have really infused so much of confidence into this bowlers. They are bowling with their tails up. There is a sense of urgency, a spring in the stride. They mean business. Team Challengers looks to be in great form here. Dominating the proceedings, no end in the driver's seat. पांच ओवर के बाद 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर अपने 2 ओवर्स में केवल 7 रन से दिए हैं दीपेन ने. एक बेहतरीन रनआउट भी उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में किया. तो कुल मिला के काफी अच्छा परफॉर्मेंस है. जिस तरह के अच्छे परफॉर्मेंस की अपेक्षा की थी विक्रम ने उनसे, उस अपेक्षा पर बिल्कुल खरे उतरते हुए. मैंने पहले ही कहा कि पहला का मैच काफी साधारण था दीपेन पटेल के लिए, और ये बात उससे भाई नहीं है. उसे पता है कि ये मुझे जल्द से जल्द फॉर्म में आना है. It's too good a player to be out of form for a long time because he's an all-rounder, and as far as his bowling is concerned, he's such a reliable bowler. Very miserly, very steady, always keeps bowling in the right areas. Yeah, I'm sure that Dipen must be a source of inspiration to so many of the 45 plus cricketers who are playing the game at the Goregaon Sports Club. They are taking a leaf out of the book of Dipen to stay fit, to keep continuing playing. And once you stay fit, you lead a quality life. End of the day, it's all about staying fit, leading a healthy life. And what better than the cricket field if you are a cricket player? Keep playing cricket. Do not stop playing cricket. Nicely bowled. Dipen, the man in pursuit. He will cut the shot. With that couple, let's go on to 29. It was nicely played by Aryan, dropping his hands at the time of playing the shot, keeping the ball all along the ground. Down the leg side, wide being signaled. If he had to put at least some bat on that ball, that would have been a dot shot boundary. But in any case, a wide signaled, one extra
run, one extra ball. जब आप वेदांत जैसे गेंदबाज को बैकफुट पर खेलते हो तो वो कयामत को न्योता देने जैसा है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ज्यादातर वेदांत की बहुत सारी गेंद टप्पा खाकर विद द आर्म अंदर आती है. अच्छी गेंद, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से उस गेंद को थोड़ा सा टॉसअप किया था. उस एक रन के साथ रन संख्या अब 31 रनों पर, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर. स्ट्राइक पर है बाहुबली. बाहुबली पवन पनारा. आज काफी समय मिला है पवन को के सेट हो, अपना नेचुरल गेम खेले. थोड़ा सा मिसक्यूड हिट, लेकिन पवन जैसा स्ट्रांग बल्लेबाज थोड़ा सा मिसक्यूड हिट भी लगाता है तो गेंद काफी ट्रैवल करती है. ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि पवन को बल्लेबाजी करने का मौका आखिरी 6 या 7 ओवर्स मिलता है, कभी कभी आखिरी 5 ओवर्स में. पहली बार मेरे ख्याल से 2 सालों में पवन को पहले 5 ओवर्स में खेलने का मौका मिला है. शॉट सिलेक्शन पवन के लिए आज बिल्कुल निर्णायक होगा. ना केवल पवन के लिए बल्कि टीम वॉरियर्स के लिए. किस तरह से पवन अपनी इनिंग्स को सजाता है, संवारता है, ये ज्यादा इस मैच का रुख तय करेगी. पूरा सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेला. चलिए, वेदांत के 3 ओवर्स समाप्त हो चुके. 16 रन दिए हैं, अब तक 1 विकेट हासिल किया है. 6 ओवर के बाद केवल 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर वो रिक्वायर्ड रन रेट अप 10.64 तक जा पहुंचा है. It's going to be Monish to bowl from the com box and the man on strike, Aryan, 10.6 for the asking run rate. Definitely a mountain to climb here, but if these two batsmen can really play their natural game for the next, say, 7 to 8 overs, if they can stay at the wicket, we have a match on our hands. Nicely struck into the gap. A man in chase will not be able to stop that one. Definitely one of the most sweetly timed shots of the tournament. Not just tonight, but that will have to be one of the best timed shots in the tournament so far. Exquisite timing, dot shot boundary off the blade of Aryan. Exquisite timing, the placement just about perfect. That had a dot shot boundary written all over it. Superbly played. The shot of a man in good touch. Change in pace, and yes, he's got his man there. Superbly bowled. Experience versus youth, and the experience is one up over youth. Back comes Aryan Patni against all odds. Everybody has gone a pin drop silent in the camp of Warriors. Everybody is stunned. What a big player on his way back to the pavilion. Good thinking by
Monish. Superb catch by Jaju under pressure. Half the team back in the hut. He's cross with himself, not happy. Today's been slightly off color. Something seems to be playing on his mind. Maybe he's carrying some injury, some niggle. He's human at the end of the day, isn't he? The new man in Parth. Yes, Parth really needs to stay at the wicket. He needs to give company to the more dominating batsman at the other end, his partner Bahubali. But this has been a tremendous performance by Team Challengers. The only thing that went in favor of Team Warriors was the toss. Apart from them, nothing seems to have worked for them tonight. It's all the way Challengers till this stage. And yes, Team Challengers have been clinical in their approach. But remains to be seen whether they will be tested tonight here. They are on cruise mode. They are on cruise mode at this stage. Will they be tested here? तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर वापसी का रास्ता खोजना होगा। टीम वॉरियर्स ने एक बेहतरीन टीम है, अब भी एक मौका है वापसी करने का, खोजना होगा रास्ता। तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर मैच में वापसी करनी होगी। 7 ओवर के बाद 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट अप 11.15। अब भी उम्मीद की किरण, एक बड़ी किरण मौजूद है बाहुबली के रूप में। आज ये लक्ष्य और इस तरह की स्थिति, विपरीत परिस्थिति इस आज वॉरियर्स के बैटिंग डेप्थ को टेस्ट करेगी। A test of character for the team Warriors. It will be a test of character for them. Rahul Jha to bowl from the far end. He's been brought into the attack, being introduced from the far end, and it's going to be Panara to face him. बेहतरीन कैच, सुपर्ब कैच, जेनसन एलईडी लाइट्स, विकेट गिरा है वहां पर, शानदार कैच। विक्रम पंजवानी इस सीजन में काफी अच्छी शुरुआत बतौर बल्लेबाज, काफी अच्छी शुरुआत बतौर कप्तान, काफी अच्छी तरह से अपनी टीम को लीड करते हुए बाहुबली पेविलियन में वापस आते हुए। 37 रन पर 6 विकेट्स गिर चुके हैं। तो
थोड़ा सा नेट रन रेट की तरफ भी टीम वॉरियर्स ने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा, because if they get all out and they lose by a big margin, that net run rate will take a mammoth beating. So you got to be careful. You got to make sure that you do not lose all your wickets. That net run rate really could come into play at the end of the league stage when we get into the business area. The new man in, a prolific senior wicketkeeper batsman Hemant Mohite. A good start here for Rahul Jha. Taking that wicket of Pawan was really a big wicket, a big blow. A flick of the wrist. A man stationed in the deep will have to be happy with just a single, which takes the score to 38. 3 more balls to come in this over. 6 wickets down. Can they fight back? Can they inch their way back into the match? Nicely bowled. Tossing up the ball. 39 for 6 is now trying to try all the tricks in the trade, trying to get all his variations going. Quite wide. The right call. 1 extra run up on the board. It takes the score to 40 for 6. No. End of a successful over. Score at the end of 8 overs is 40 for 6. Yes, see, all the 8 teams are almost evenly balanced because we had a fantastic auction format designed by Karan Baiwale and his team, courtesy which it could be anybody's game this season. All the teams are evenly balanced. The star players have been distributed across all the 8 teams, the senior players the same. So the team that performs better as a team will have a big chance to win. Just the way team challengers have looked so clinical in their approach right from the word go. They have really meant business. You got to convey to the opposition quite early in the match that tonight we really mean business. We are here to win the match. We are not here to do charity. We are going to be winning this game no matter what. So quite early in the match, you got to convey to the opposition that you are a tough nut to crack. You're going to make life miserable for your opponents. You're not here to be charitable.
You are here to win the match no matter what. That is the kind of a strong message that you really need to give to your opponents quite early in the match, and that is what the team Challengers has done. After having lost the toss, they were asked to bat first. They lost a couple of quick wickets and also the third wicket, but they really fought their way back. And I really kept saying that in spite of losing wickets, Team Challengers is continuing to play the natural game. Indeed, they had the depth in their batting, and the depth in the batting really was showcased tonight for Team Challengers. And that move of the captain by sending Jaju at the number 7 really worked wonders for the team. Yes, so once again, Dr. Agarwal is with us, the chairman of the medical cell and a very senior personality at the Goregaon Sports Club. चले डॉट शॉट चौका मिला वहां पर, राउंड द कॉर्नर मोड़ दी, केवल दिशा दी विक्रम पंजवानी, थोड़ी सी दिशा से भटके थे, फलस्वरूप डॉट शॉट बाउंड्री के रूप में 4 रन मिले, 45 रन। नजाकत से खेला हेमंत मोहिते ने। हम सभी जानते हैं कि मोहिते एक बड़ा नाम है यहां पर सीनियर क्रिकेटर्स में। कूल एंड कंपोज्ड, बहुत ही रिलायबल प्लेयर हेमंत। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा बाहर होने के कारण वाइड दी, लेकिन इनवाइट किया था बल्लेबाज को कि बड़ा शॉट खेले, सटीक डिलीवरी थी। इन वक्त पर हेमंत मोहिते ने उस गेंद से किनारा किया था, अपने सभी वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हुए विक्रम। इस सीजन में विक्रम पंजवानी और उनकी पूरी टीम ज्यादा पर्पसफुल नजर आती हुई। मे बी दे आर द टीम टू वॉच आउट फॉर, द टीम विद दैट एक्स फैक्टर, टीम चैलेंजर्स। यस, जिस तरह का क्रिकेट इस सीजन में पहले 2 मैच में दर्शाया है टीम चैलेंजर्स ने, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी टीम को इस सीजन में बड़ा चैलेंज दे जाएगी टीम चैलेंजर्स। ये तो बिल्कुल अब स्थापित हो चुका है। वाइड का इशारा। नौ ओवर के बाद 48 रन, 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होंगे।
बहुत ही बढ़िया गेंद और सीधे सीधा उंगली उठी. The dreaded finger has gone up, finding him plumb in front of the wicket. Hemant Moite on his way back. The 7th wicket has fallen for Team Warriors. He's taken a referral. Chale, into the hot seat. Over to Abhishek. Okay, there's a referral for LBW. Checking for the fair delivery. It's a fair delivery. Waiting for ball tracking. Okay, ball tracking on screen. Okay, the ball is pitched in line. Sort of pull it back, please. Pull it back. Okay, checking once again. Ball is pitched in line, hitting in line with the middle and leg stump and going on to hit the leg stump. Seems like so. You can stay with your original decision, Prathamesh, of out.
49 for 7. Yes, definitely a big ask now, a mountain to climb here. Fifty runs up on the board for Team Warriors. Yes, something to cheer for. Yes, but still a long way to go, and that net run rate needs to be kept in sight at all times. It cannot skip away from your scheme of things. That net run rate could really mean hell of a lot when we come to the business part of this tournament. डॉट के साथ अपने इस ओवर को शुरू किया. फ्लाइटेड गेंद लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन करते हुए, अपने सभी वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल फॉर्म में है. काफी सकारात्मक तरीके से टीम चैलेंजर्स बड़ी जीत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई. चले बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डॉट शॉट बाउंड्री. इंटेंशनल नहीं थे लेकिन वेलकम रन्स. इस वक्त बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में इस वक्त अपनी टीम की डूबती नैया का कमान संभाले हुए पार्थ शाह और रोहित राजन. नैया पार लगानी होगी, फाइट करना होगा. There's an appeal for run out, waiting for the side on angle. Okay, the bat is grounded behind the popping crease before the bails are dislodged. Batsman is not out. Batsman is not out. बहुत ही बढ़िया टाइमिंग.
Dot shot boundary. અને એમાં એક 67 for 7 at the end of 12 overs. Vedant to bowl the final over of his spell. He's given away 16 runs of the 3 overs that is bowled and has also taken a wicket, but he's bowled with a purposeful intent. He's bowled aggressively, not being able to contribute with the bat, getting run out. He slipped at the time of taking that run. Unfortunately, no time to come back home, and in the bargain, going back to the hut, courtesy being run out. But it's bowled quite aggressively. 67 for 7. The 13th over just about getting started. The man on strike, Rohit Rajan. Yes, KP sir is back alongside his good friend Jayesh Jogia. Yes, alongside them, Vipul Kalyani is also here. All the senior cricketers enjoying the match. Clean ball aim. Vedant gets to one more wicket in the last over of his spell.
The final ball to go. He will be trying his level best to pick up one more wicket with the last ball of his spell. This is the last opportunity today evening to get one more wicket. The new man on strike, Baba. Nicely played. That was a good ball. Into the stumps. You miss a hit, but the seasoned campaigner that Baba is, the huge experience that he has, he was really up to the challenge. End of the 13th over, 69 for 8. Definitely the writing on the wall. From this stage, there's only one team that can win this match, and it's really got to be the challengers team. The required run rate now up to more than 16 and over. The current run rate just a paltry 5.31 at this stage. Today's been a team challengers, definitely all the way right from the word go. The only thing that was in favor of team Warriors was the toss. And after the toss, it's been downhill consistently tonight. But they are a champion team, and definitely they will be one of the hot favorite teams to make it to the knockout stage in spite of this loss. They remain to be an extraordinary team here, Team Warriors. It's going to be Gaurav Devli to bowl from the far end. The man on strike, Dharmin Parikh. Good pace of fielding. There you can see the difference in fielding. That effort, that commitment, that dedication is the difference. Unfortunately for Team Warriors, it was a bad day in office, but Team Challengers on a mission here. टीम चैलेंजर्स ने बहुत ही जल्दी मैच के शुरुआत में ये संदेशा दिया था टीम वॉरियर्स को कि हम बिल्कुल आज सकारात्मक खेलने वाले, हम जीतने के लिए खेलने वाले। 2-3 विकेट्स जल्द खोने के बावजूद अपने आप को नेचुरल गेम से किनारा नहीं किया, लगातार खेलते रहे पॉजिटिव क्रिकेट। अच्छी टाइमिंग, फलस्वरूप टीम चैलेंजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर नजर आया। तो ये संदेशा बहुत ही जल्द मैच के शुरुआत में आपको आपके ओपोनेंट्स को देना है कि आज की शाम हम हमारे नाम करना चाहते हैं। जब आप की ओपोनेंट्स आपके ओपोनेंट फिर से एक बार डायरेक्ट हिट, चले रुक किया है थर्ड अंपायर की तरफ जेनसन। LED lights. Run out. Waiting for the side on angle. इस बीच विकी भाई मेहता का भी मैं स्वागत करता हूं। जेनसन LED lights throwing light on the decision. The bat is grounded behind the popping crease. Before the bells are dislodged, the batsman is not out. Batsman is not out. In the hot seat right from day one, Abhishek has been in good form to say the least. Well done. And yes, sometimes even the third umpire is in deep trouble because we do not have all the technology that is available to you guys when you watch the matches on TV. But the Goregaon Sports Club has really done a good job to introduce the DRS setup sponsored by Jensen LED Lights. It's a daring move by Karan Bhai, but still it's working wonders. क्या जबरदस्त शॉट, हवा यात्रा पर गेंद निकली है, बिल्कुल सैर कर जाएगी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के बाहर मिड विकेट फेंस के ऊपर से।
रोहित राजन, क्या बात है। रोहित को मैं पूरी गई सीजन सभी मैचेस में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। अगर सतीश अग्रवाल जी और कुलदीप सर के साथ अगर कोई एक ऐसी व्यक्ति थी जो लगातार क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रही थी तो वो बंदा था रोहित। और आज अब अपनी बल्लेबाजी का एक परिचय देते हुए हमेशा हर पल हर वक्त रोहित हम सभी को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार होते थे। ही वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प। He always used to cheer good cricket. Har waqt he was watching all the matches with that lens of fairness. He was enjoying the event, and this time as a player he is on the field. 78 for 8 at the end of 14 overs. It's going to be Dipen. Dipen has been in good touch tonight. The vintage Dipen today on exhibition is the Dipen that we have really come to know for a long time now. The vintage Dipen, the miserly left arm around the wicket bowler, the old warhorse Dipen once again showcasing his skills and talent and his commitment. Dipen. Dipen to Baba. बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही आला शॉट। बाबा और दीपेन ने इतना क्रिकेट एक साथ खेला है, मेरे ख्याल से गत 12 से 15 सालों तक इतना क्रिकेट साथ में खेला है। एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स हो माइनस पॉइंट्स हो, बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे की फितरत के साथ वाकिफ है और उसी बात का फायदा उठाया। तगड़ा शॉट। बाबा भी बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है और जब आप विकेट पे उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं। ये हर सीजन बिल्कुल कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सीजन आफ्टर सीजन। ये है बाबा फॉर ऑल ऑफ अस। बढ़िया टाइमिंग रोहित, क्या बात है। ये है बाहरी ग्रुप, छक्का लगा रोहित के बल्ले से। पता नहीं आज की शाम तो मैं केवल एक ही बात मुझे सता रही है कि गया सीजन रोहित क्यों नहीं खेला, क्या कर रहा था रोहित साइडलाइंस पर। चलिए आज तो रोहित, अब आज के बाद रोहित को हम एक अलग रिस्पेक्ट से देखेंगे। चलिए फाइट बैक करते हुए रोहित काफी अच्छी प्रैक्टिस अपने लिए प्राप्त करते हुए रोहित, बढ़िया बैटिंग, अच्छी गेंद। देखे किस तरह से अपने आप को रोका, बिल्कुल तैयारी में थे कि अपने आप को लॉन्च करे, एन वक्त पर अपने आप को रोका। अच्छी गेंद और काफी अच्छी तरीके से लास्ट मोमेंट एडजस्टमेंट करते हुए ठीक ठाक खेला। चले बड़ा शॉट लगाने की फिराक में थे, प्रयास भी किया, मिस कर गए। अच्छी गेंद। बारह गेंदों में 16 रन्स बना चुके रोहित, 2 पारी ग्रुप छक्कों के साथ। चलिए ये तीसरा छक्का निकला पारी ग्रुप, फिर से एक बार गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के मिड विकेट रीजन की तरफ ऊपर से शेयर करती हुई। चलिए उस छक्के के साथ रन संख्या अब 95 रनों पर। प्रसाद करकेरा भी थोड़े से अचंभित है रोहित की इस शानदार बल्लेबाजी के चलते। एक सभी सीनियर क्रिकेटर्स में एक नई दिलचस्पी जागरूक हुई है। यस, ये फाइट बैक इनिंग्स है। अच्छी टाइमिंग। यस, एक उम्मीद की किरण जागरूक होती हुई इस तरह की बल्लेबाजी के चलते वॉरियर्स के खेमे में थोड़ी सी इस वक्त उम्मीद जागी है।
15 overs, 95 for 8, रिक्वायर्ड रन रेट 17.40। अब भी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, स्टैटिस्टिकली तो पॉसिबल है। विक्रम अब गेंदबाजी करेंगे फार एंड की तरफ से। चलिए, स्ट्राइक पर है धर्मेंद्र पारिक उर्फ बाबा। ऑल अलोंग द ग्राउंड, अच्छी टाइमिंग, बड़ा अच्छा शॉट बाबा के बल्ले से। देखिए कितनी इजीली इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज इस इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे, तो अचानक से ये जो टीम चैलेंजर्स का बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा साधारण नजर आता हुआ। बहुत ही अच्छी टाइमिंग, क्या बात है। देखिए बैकफुट पर भी अच्छा खेल रहे, फ्रंट फुट पर भी अच्छा खेल रहे, अपना पूरा 360 डिग्री का जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो दर्शाते हुए रोहित, क्या बात है। लो फुल टॉस, ड्राइव किया वाइड शिमिट ऑफ पर बाबा ने। 30 रनों की पार्टनरशिप मुकम्मल हो चुकी है। A partnership worth 30 runs for the 9th wicket is indeed a superb effort. One more ball to go. He's all pumped up. Nicely punched away. 100 runs up on the board. And yes, Mayura is going to make some noise. Not just Mayura, but the camp of Team Warriors. At last, something to cheer for. Anything that now they score in excess of 100 is going to be a bonus, because that will really serve their net run rate. 100 for 8 at the end of 16 overs. Required run rate 20.50. 2 wickets in hand. 24 balls and 82 runs to win the match. अब मेरे ख्याल में सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आर्यन की तरफ से अंदर जाना चाहिए वो है, एक तो पहली बात तो ऑल आउट नहीं होना है, और 100 से ज्यादा जो भी रन्स बनेंगे थोड़ा सा नेट रन रेट के लिए और भी ज्यादा सहायता होगी। पता नहीं कब नेट रन रेट वाला मसला इक्वेशन में आए। हम लोगों ने गए सीजन में देखा कि क्या हुआ था नेट रन रेट को लेकर, तो इस वजह से अब नेट रन रेट पर शुरुआत से ही थोड़ा सा गौर फरमाना आवश्यक है। मोनिश शाह अब बिल्कुल तैयार होते हुए, अब तक 2 ओवर्स किए हैं, 2 विकेट्स भी लिए हैं, 10 रन केवल दिए हैं, और नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और डेथ ओवर्स में भी ओल्ड बॉल के साथ काफी सटीक तरीके से अपना स्पेल करते हैं। देखिए बाबा कितनी सहज तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे, कोई भी टेंशन नहीं है बिल्कुल, और अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, जरा भी टेंशन नहीं है, सकारात्मक क्रिकेट खेल रहे दोनों ही।
रेंज में थी लेकिन ज्यादा फुल थी, ज्यादा फुल थी। अगर थोड़ी सी छोटी होती तो शायद गेंद के नीचे आने में कामयाब होते रोहित। धर्मिन, चलिए स्ट्राइक पर अब फिर से एक बार रोहित, जिन्होंने 18 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 25 रन बनाए हैं। चलिए अब 6 के 6 गेंदों में चौके चाहिए कम से कम, हर गेंद पे चौका। अब अच्छी टाइमिंग, गेंद चीरती हुई निकली। चलिए पहला चौका तो मिल चुका है, डॉट शॉट बाउंड्री। क्या बात है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हो, बढ़िया इनिंग्स, एंटरटेनिंग नॉक, फाइटिंग नॉक। चलिए अब इस इनिंग्स के चलते आर्यन पटनी तो अगले मैच में बिल्कुल प्रमोट करेंगे रोहित को। बनता है ये प्रमोशन। क्या टाइमिंग देखिए, ऑल अलोंग द ग्राउंड, क्योंकि बाबा स्विफ्ट रनर बिटवीन द विकेट्स नहीं है, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया। रिक्वायर्ड रन रेट 23.68, यानी कि हर गेंद पर चौका लगना अब भी बिल्कुल अनिवार्य है। थोड़ी सी लूज गेंद थी और ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। मौका मिला था ग्राउंड के बाहर उस गेंद को पहुंचाने का, एक बड़ा मौका था, मिस करके बाबा। ओवर की समाप्ति 17 ओवर के बाद 108 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 74 रन बनाने हैं, 18 balls and 74 runs to win the match with just 2 wickets in hand. The required run rate now 24.67. चलिए अब केवल एक चमत्कार ही टीम वॉरियर्स को इस मैच में टारगेट के नजदीक ले आ सकता है, केवल एक चमत्कार। लेकिन दाद दूंगा मैं जिस तरह से रोहित राजन ने बल्लेबाजी की है, और धर्मेंद्र पारिक भी काफी सुलझा हुआ क्रिकेट खेलते हुए, ये नेट रन रेट के लिए काफी सहायता होगी। जो ऐसा लग रहा था कि 100 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, अब 100 के उस पार गए और शायद ऐसा प्रतीत होता हुआ कि ये 20 ओवर्स भी खेल जाएंगे। विक्रम अपने स्पेल को शुरू करेंगे फार एंड की तरफ से। अब तक 3 ओवर्स में 20 रन देकर अभी तक कोई भी विकेट नहीं ली है। स्ट्राइक पर बाबा, चलिए बड़े हल्के हाथों से खेला है, स्ट्राइक लौटाई है रोहित को। जब कभी रोहित स्ट्राइक पर आते हैं तब बिल्कुल दिलचस्पी जाग जाती है हम सभी में। अब तक 41 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। थैंक यू जॉन्टी सिंह। फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव किया, राहुल जा मौजूद।
रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक भी है ऐसी स्थिति में। एक बाउंस वेदांत के हाथों में, एक ही रन प्राप्त होगा। कल का मैच दोस्तों गैंगस्टर्स और टीम राइडर्स के बीच ठीक 6:30 बजे टॉस टाइम, गैंगस्टर्स वर्सेस राइडर्स टुमारो। चले गैप में खेला है वेदांत ने, दौड़ लगाई है, शायद एक ही रन से समाधान प्राप्त करेंगे क्योंकि बाबा तो दूसरा रन नहीं लेने वाला है। नेल्सन मार्क 111 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस 18वें ओवर की आखिरी गेंदबाजी बाकी। कुल मिला के अब 13 गेंदबाजी बाकी है। एक बड़ी जीत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई, जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई टीम चैलेंजर्स बिल्कुल जीत की दहलीज पर। टीम चैलेंजर्स और जीत के बीच बस अब औपचारिकता का फासला बाकी है। पंजवानी ने अपने 4 ओवर्स में 23 रन देकर बिना कोई विकेट लिए एक अच्छा स्पेल मुकम्मल किया। पेनल्टी ओवर को लेकर यानी कि 19वें ओवर को लेकर मोनिश गेंदबाजी करेंगे। अब तक अपने 3 ओवर्स में 2 विकेट लेकर 18 रन दिए। काफी प्रभावशाली स्पेल किया है आज मोनिश ने, बिल्कुल अपने फॉर्म को फिर से एक बार स्ट्राइक किया है मोनिश ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टीम चैलेंजर्स के लिए, जबकि उनके बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे हालात में अगर उनके बॉलिंग ब्रिगेड के जो अहम गेंदबाज है अगर वो भी अच्छे फॉर्म में होगा तो ये चैलेंजर्स टीम बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी चैलेंज देगी हर टीम को। डार्क हॉर्स टीम हो सकती है टीम चैलेंजर्स। If they continue to play in the same vein, they could really be the team to beat, the team to watch out for, the dark horse team of the event. Team challengers on a roll here, playing some good cricket. Still early days, but off to a good start as far as their campaign is concerned. A dream start here for team challengers. Oh, what a shot. क्या बात है, किधर थे आप भाई साहब? वेयर वे यू रोहित? Free flowing shot off the bat, just leaning into it, growing in confidence, and yes, he's exhibiting his wide range of shots. ओहो, जबरदस्त शॉट धर्मेंद्र पारिक ने लगाया है, पारिक ग्रुप छक्का। क्या टाइमिंग, प्योर क्लासिक टाइमिंग। 51 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 9वें विकेट के लिए। किसने सोचा था? इसी वजह से हम कहते हैं कि ये गेम बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है ये। क्या टाइमिंग, बढ़िया लॉन्च किया अपने आप को। अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, उस परिवर्तन को बहुत ही जल्दी भापा, अच्छा शॉट खेला। स्ट्राइक वापस रोहित के पास। अब चले केवल औपचारिकता बाकी है, लेकिन 120 रन हो चुके। नेट रन रेट के लिए एक वो संजीवनी के रूप में एक जड़ी बूटी यहां पर हासिल हुई है। नेट रन रेट काफी सम्मानजनक होगा। अब चलिए, ये गेंद गई गई पारी ग्रुप छक्के के लिए, बिल्कुल सैर करने के निकली वो बस डेपो में गेंद मिड विकेट फेंस के ऊपर से। रोहित राजन चलिए अब कल से बिल्कुल सुर्खियों में होंगे रोहित राजन। क्या बात है, क्या इनिंग्स के लिए सभी के मन को जीत लिया है। 38 गेंदों में जा पहुंचे, 26 गेंदों में 38 रन बनाए हैं।
चलिए स्ट्राइक अपने पास रखिए। 19 ओवर के बाद 127 रन। क्या आखिरी 6 गेंदों में अपने हाफ सेंचुरी को बना पाएंगे क्या, ये देखना होगा। मौका है, केवल यही दिलचस्पी है, क्योंकि जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है जब आपको 55 रन चाहिए। केवल अब यही बात हम सभी को इस मैच देखने पर मजबूर कर रही है कि क्या रोहित राजन अपना अर्धशतक लगा पाएंगे। शायद स्ट्राइक 6 के 6 बॉल रोहित को खेलने होंगे। पता नहीं किस तरह की अब रणनीति उनकी टीम बनाती है, क्या संदेश अंदर गया है पता नहीं। एक मैसेज तो बिल्कुल आर्यन ने भेजा होगा, और ये मैसेज तो ये होगा कि रन आउट, अपने विकेट मत देना भाई, कुछ भी हो ऑल आउट नहीं होना है, और ये विकेट नहीं गिरनी चाहिए ताकि ऑल आउट होने का कोई सवाल ही ना हो। राहुल जा गेंदबाजी करेंगे। दीपेन के सर के ऊपर से डॉट शॉट बाउंड्री। 131 रन। रोहित राजन जा पहुंचे 43 पर। बहुत कम मर्तबा ऐसा होता है कि हम टीम का स्कोर नहीं देखते, इंडिविजुअल स्कोर देखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हम सभी की निगाहें इस वक्त केवल रोहित राजन पर लगी हुई है। बढ़िया टाइमिंग, क्या बात है, और एक डॉट शॉट बाउंड्री। रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। रोहित राजन अपने आप के लिए एक बड़ा नाम करते हुए, अपनी पहचान बनाते हुए, अपने आप की रेपुटेशन को पुख्ता करते हुए, क्या इनिंग्स के लिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चले अब अगले कुछ दिनों तक तो बिल्कुल सुर्खियों में बने रहेंगे। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की गलियारों में केवल एक ही चर्चा होगी अगले 3 या 4 दिन, रोहित राजन, रोहित राजन, रोहित राजन। ही इज ऑन टू 47, 3 balls to go. It's all over. What an innings comes to an end. थोड़े से हम सभी डिसअपॉइंटेड है। वो 50 रन अर्धशतक चाहिए था उनके लिए। चलिए शायद एक अच्छा प्लेयर अब अपने आप को एस्टैब्लिश करता हुआ, और अब हैप्पी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। एक सक्षम बल्लेबाज हम सभी जानते हैं, तो हैप्पी को तो कोई एडवाइस देने की जरूरत है ही नहीं, केवल आखिरी 2 गेंद को खेल लेना होगा, ऑल आउट नहीं होना है। डॉट शॉट बाउंड्री। चलिए एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद टीम वॉरियर्स की इनिंग्स 85-90 के अंदर समेट जाएगी, लेकिन नहीं। ये नेट रन रेट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त काम किया है यहां पर रोहित राजन और बाबा ने।
चलिए ऑल आउट भी नहीं हुए और एक सम्मानजनक स्कोर लाइन तक जरूर पहुंचे, लेकिन अभिनंदन, ढेरों शुभकामनाएं टीम चैलेंजर्स को कि एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है, बहुत ही बड़ी जीत। चलिए इस बीच आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए आप सभी पहुंचे। हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन करण भाई वालिया से विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द स्टेज पर आए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर श्रद्धा गाला जी को, विजय जी झा, ललित जी विज, विकी भाई मेहता, इन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पधारे। चलिए दोनों ही टीम्स प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हुए पोस्ट द मैच दोनों ही टीम्स ने अच्छा क्रिकेट खेला, फाइटिंग क्रिकेट इन वक्त में बिल्कुल टीम वॉरियर्स ने खेला। विशेष रूप में रोहित और धर्मेंद्र पारिक को काफी क्रेडिट देना होगा। यस, इस बीच में हम सभी के गुरुवर्य व्यक्तिमत्व के जैन साहब से विनती करता हूं, जैन सर आप प्लीज स्टेज पर आए। यस, प्रसाद करकेरा, यू ऑल्सो नीड टू बी ऑन स्टेज। गोल्डी भाई विज, विजय भाई झा, विकी भाई मेहता and Shraddha ji Gala, the governing council member. Yes, may I request team challengers to please come up in front of the dais. Vikram. Yes, चलिए सीधे सीधा में. Yes, Vicky bhai Mehta, where are you, Vicky bhai? Rahul bhai Ja, Vicky bhai, please. Vijay ji Ja, yes, welcome sir. Vikram bhai, Vikram Panjwani. चलिए स्ट्रेट अवे में आमंत्रित करता हूं आर्यन को। आर्यन सबसे पहले तो आर्यन, आई होप योर इंजरीज नथिंग टू वरी, क्योंकि अगर आपको कोई इंजरी होगी तो पूरा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में मायूसी छाएगी। No, it's a minor one and it's a part of the game. But I think the way we fought in the end, it was commendable. And we were short of, actually, we were short of 4 players, 4 of our main guys. And despite of that, the effort the team has showed, I think when they come back, we're going to be a very strong team and we're going to come back way stronger than this. Plus, I think it was a matter of a few catches. If you would have taken that in the start, then the story would have been a little different. For the first time, I saw you slightly off color, not with the bat. I'm talking about Aryan, the bowler, slightly giving away extra runs down the leg side wides for the first time. Yeah, I accept that and I have to take more responsibility. But I'm sure I'm going to come back stronger and so is the team. Thank you and a warm round of applause for the talented Aryan Patni. And yes, the happy captain is making a habit of this, Vikram Panjwani. Congratulations, Vikram. One more win. Your season is off to a great start. And
Yes, you all were so clinical in your approach. You all really meant business. The only thing that went wrong for you in this match was the toss that you lost. Rest everything fell in place. Yeah, firstly, I would also like to appreciate the late burst from Rohit. Otherwise, it was a very convincing win. And I would also like to wish a speedy recovery to Aryan. He's one of the most talented players in GSE. We want him to be totally fit for the coming matches, which is good for GSE cricket. Coming to my team, more than the 180 runs we scored today, I am most pleased with our fielding and catching. That was outstanding. And the total credit for this goes to our coaches Neil and Swapnil. They've really worked hard on our fielding, and this was actually showing today, you know. And batting, even though we were losing wickets in a hurry, but we made sure our run rate was never down. We were always up with our run rate, and this is what we are happy about, and we'll continue playing like this in the games to come as well. Thank you and wishing you the very best. Your team really is on the right course. And now may I invite Mr. Vikibhai Mehta to and Shraddhaji Gala to please do the honors of handing over the Man of the Match award. And to collect the Man of the Match award, may I invite Rahul Jha, 3 wickets and 17 runs. Yes, sir, we have got the goodie bag that we made for the GSC Marathon. We have got the body first gift hamper. We've got gift hamper from the Gajjar group. We also have Zig Studio handing over the Man of the Match vouchers. Quite a few individual prizes to be collected. Man of the Match, Rahul Jha. Warm round of applause, ladies and gentlemen. Yes, Rahul. Such was the team effort of your team, and each and everyone just about contributed so well. So it was difficult for us to pick up the Man of the Match, and the app really helped us. So Rahul Jha, that was a convincing victory, and your team is on cruise mode at this stage. Yes, so that's the most satisfying thing because if you see that scoring 180 is not a one-man's job, it's a complete batting success of all the players that went into the bat. And as you have also mentioned throughout the innings, that at no point did we curb our natural game. We because we have such a good batting lineup that we trust each and every one of us to go out there and play their best cricket. So yeah, that in fact that is what I think has set up this win, because the way Jigar and Jaju played the last 4 to 5 overs, the difference between a 150 and a 160 score to a 180, that I think was the game-changing moment. And yes, the app would obviously look at the number of points accumulated, but cricket is a human game, and if you see, I think the runs that they scored were much more important than the 3 wickets that I took, because that actually helped the team to win. So I would ask Jigar and Jaju to come up and share this award. Thank you so much. Yes, a great camaraderie shared amongst the players, not just one team, across teams. Yes, tomorrow's match, sharp 6:30 p.m. Gangsters versus Riders. Tomorrow 6:30 p.m. I request one and all to be assembled at the ground for the toss tomorrow. Gangsters and Riders tomorrow 6:30 p.m. With this, we come to an end. Thank you, ladies and gentlemen, all the guests, and a big thank you to all the supporters, the fans. Thank you to both the teams. Thank you to the umpires, the groundsmen, the staff members, and team Pramod Kashyap for the wonderful job that they have done. A big thank you to all the viewers on YouTube. We meet up tomorrow evening, 6:30 p.m.